ICSSR social science तो है उसके अंदर philosophy उसके पहले शुमार की जाती थी. So they said, no, but you need to have a special council, and so this is the only council in the world which is entirely devoted to the cause of philosophy. So the Indian Council of Philosophical Research is very, very unique, very special. It has contributed to the development of both research and teacher training, seminars, workshops, publication in this country. And I think a large number of students and teachers have benefited from that by being exposed to some of the best learning in the country, also getting foreign scholars almost every year, sending some foreign students from here abroad, organizing seminars, workshops, symposiums, occasional papers, publications. So the contribution of ICPR has been huge on the philosophical scene of the country, and I feel very privileged to have been associated with it from its very inception. As Lakshmikant mentioned, of course, it's a pleasure that we have Abhi Sachidanand, who is a very good friend of mine. And yesterday I also made a friend with his lovely wife, who looks like she reminds me of my niece, and I could always think of her like my child, which she doesn't like, but so it's a great pleasure to see all of you young people who are interested in philosophy and working on these areas. One of the things that I want to do today, because this is an area which is a little complicated area. As you see that what's written in Paryavaraniya, that Paryavarana Darshan or Sanharaniya Vikas, sustainable development, ya Vahaniya Vikas isko bhi kehte hain. Now these are questions about which are very everyday kind of questions. And generally when we are working in philosophy, we generally work with a huge amount of a priorism. My own trajectory has been as I have been working on analytical philosophy, mainly on the problems of necessity and ipraricity, a very formal part of formal linguistics and philosophical logic. And then my work has also been in the area of actual work with women and children. And many people find that there's a great deal of contradiction, that how does your activism go well with theorization. Also, the difficulty is what I'm going to talk about today, which is feminism. Because feminism is essentially activism. You can't have a theoretical feminism. There is a feminist theory, but the feminist theory is also somehow or the other very closely related to the women's movement, and it essentially takes you down to activism. So there's nothing like pure academic feminism. There can be academic women's studies. I was the director of women's studies for about 9 years, and I continue to work in that. And why I'm beginning with this is that there are many important questions which are haunting us in this present time. And the one question that I was discussing with Dr. Mishra was some of the very old debates in the Greek world, like the debate between the lawyer, the politician, and the philosopher. Because the lawyer and the politician cannot wait for the final truths to come. While the philosopher is saying that unless you have the final truth, you can't make the next move. So how do you do that in any case? So the question of emphasis of philosophers on foundationality, the questions of the philosopher on, say for instance, if you're looking at the Indian philosophical system, you're looking at Aniksha as the primary thing in terms of analysis. You also talk about sadhana, you talk about other issues, etc. But mainly, the academic disciplines in the university is primarily Aniksha, which is the investigation of the science of review about the most basic concepts that you have. So there are, how many concepts are there? There's the concept of environment, there's the question of philosophy, there's the question of sustainability, and there's the question of development. And today, perchance, we are going to talk about feminism. Now, what does environment mean? What does physical environment mean? What does natural environment mean? What does social environment mean? We have discussions on these questions right from the time of Aristotle. And you know that how Aristotle talks about the physical environment, he talks about the animal species, he talks about plants and animals, then he talks about the moral environment, which he's discussing in his works of morality, where he's talking about Nicomachean ethics and the others. And then he has the grand kind of questions which he discusses in posterior analytic or in the so-called metaphysics, where he's talking about being qua being. Similarly, there are these questions about when you, how many, आप लोगों में से नए development के ऊपर कौन लोग काम कर रहे हैं?
Is somebody working on development and development ethics or development? Actually, all the participants have specialization on an art. Okay. Either they have done their PhD or they're working on an art or they have completed. Oh, lovely. Then I assume that you're all aware of the discussions on development. Now, when you're looking at development, what are the development parameters that we are looking at right now? Mainly, philosophical contribution किसका आप देखते हैं development criteria पे? विकास के मापदंडों को या विकास के मानक क्या होंगे? इन संदर्भों में हम लोग अभी आजकल किसको देख रहे होते हैं ज्यादातर? Right, but in terms of philosophical, the information coming from the path of philosophy. Even if you're looking at the Sustainable Development Goals, Sustainable Development Goals, अब आप 2000 की report देखें, 2000 की report UNDP की report में So the Sustainable Development Goals, all the ideas of development, how do they come in? If you look at the UNDP reports, I also wrote one part of the UNDP report on gender development, and you can see up to the challenges development. The last report. Now, if development के goals को नापते कैसे? Development को नापते कैसे? अगर हम ये करते थे कि development का इधर तो ये developer को क्या developer के पास क्या होता था ज़्यादा? Whoever has more money will be the development. That would be the economic criteria that you're looking at, and how are you measuring it? From gross national product, gross development product, per capita income, per capita saving. These are the kind of criteria that you're looking at. Then you said that we can't have to doing this. Huh? This is the issue of data. No man is carried away. So the question is that then they said that you can't just look at development only in terms of income, because income only has an instrument value. So what we will look at are also the other two indicators, and what are the two indicators that were brought in? Health and education. So you said health, and how do you measure health? You will measure health in terms of mortality. Mortality rate, return on mortality rate, and how you. Then they said, okay, we'll also look at education. So how do you look at it? You look at mean years of schooling, enrollment, achievement, and literacy. Then they said it's not enough. You also need to have from 2000 onwards, in fact, meaning from 1998. They said we'll start looking at the other question, and that we'll also look at gender. How does it go? How many men and how many women? But we एकदम गलत. Gender है बिल्कुल नहीं था, sex segregated gender था, कितने आदमी कितनी औरत जुड़ा gender नहीं, लेकिन उसका नाम उसका GDI, GDM ये सब gender है. This is one big idiocy जो मैं हर बार बताता था. It's not gender, it's actually sex segregation. Then they said that we also need to look at political participation. How many people are there in governance and what is their participation? ये तो उनके broad parameters हो. लेकिन इन parameters के पीछे राष्ट्रीय चिंतन क्या था? ये पूरी यूएन रिपोर्ट आ कहां से है? यूएन की कहानी शुरू कहां से हुई? Where are they getting their inspiration from? They are getting their inspiration from the writings of the Enlightenment and also the pre-Enlightenment process. And who is the most influential person who actually goes into the writing of the documents is actually Immanuel Kant. And what is the most important work that they are referring to is primarily perpetual peace. And perpetual peace is actually not a document by Kant, it is actually a document which is commented on the writings of Rousseau, which is actually a commentary on another philosopher, not a philosopher, but a church father called Saint Gobain.
उसने गोलैंड का एक डॉक्यूमेंट आया जिसके ऊपर दूसरों ने अपनी कनेक्टिविटी की और उसके ऊपर फिर काम किया अपनी कनेक्टिविटी एंड देन ही सेइंग कि उन्नीस जो बड़े मुल्क हैं अगर वो आपस में एक दूसरे से संधि करते हैं एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के सब बच्चों को जानना जरूरी है। उन्होंने ये कहा था कि 19 बड़े मुल्क अगर एक बार आपस में ये संधि कर लें तो आगे से कभी नेवर गो टू वॉर और आपकी बात होती है मैंने इसके बाद नहीं किया and then we will try and demilitarize. Then that would be the best thing for perpetual peace. Because then you will no more require money to be spent on that. You will spend money on the development of your own country, and your people will say, "Wow, so you're a prince to me. You get the consent of the believe me, and if you are regulated, you will get the same." And this, but it seems so contrary to country. The country categorically that can't be about it. और काम के लिए बाद में ये बात कही कि लेकिन ये वाली बात नहीं कि नॉट इन टर्म्स ऑफ the general principle and what is the general principle? This is again what this people like Russell. So that's so one big contribution to the development debate. I think we need to see that even in the key standards of UN and others, they get or acknowledgement. Okay. The other question is, yeah, these are the environmentally unfriendly things. So, plastic flowers. So the other thing is, when you look at this, the other big discussion in development, if you look at the recent debates, is आपने कहा कि सभी लोगों को सब कुछ मिल जाना चाहिए। जो गरीब हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उन सबको भी सब कुछ मिलना चाहिए। ये वाली बात आप अनेक भावों से कह सकते हैं, करुणा से कह सकते हैं, दया से कह सकते हैं। पर ये बात हुई कि आउट ऑफ चैरिटी की वजह से आपने देखा होगा कि खासतौर से जो इंडिया की भी गवर्नमेंट के जो प्लान थे, दे वर कॉल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। बट देन दे सेड कि नहीं, आप चैरिटी नहीं चाहिए हमको। It's a matter of rights. So development is actually a matter of rights. And the whole discourse of development was transformed from the charity and the welfare-based idea. So women and child welfare department ki jagah, they said that no, we actually want now the department has to be called women empowerment. And so we are asking for, not for charity, we are asking for our rights. And so both for children and for women and for the destitute and for the disabled, so-called, or whoever who doesn't fall into the mainstream, we are talking about development in terms of our rights. So the whole question is again in terms of rights. अब ये human rights की कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? इसका philosophical history कहाँ जा रही है? History आप देखेंगे तो enlightenment philosophers से जा रही है. It again, you again go back to Immanuel Kant. And you have the whole discussion, then you can go to Locke, Republican government, then you look at Popper, and you look at all these people who are talking about so human rights and that, or uske reference. So development has to be looked at, one, in terms of welfare, two, it has to be looked at in terms of rights. What has happened in the past years, as I think you are all aware of, is that the discussion has now taken a shape in which it is very good for us as philosophers to look at it, that it has now started looking at it in terms of human capabilities. And two people are largely responsible for that in putting it onto the international vocabulary of development indicators. One is Professor Amartya Sen, who's again Indian origin, and the other is Professor Mehboob Haq, again, and Pakistani, but and Southeast Asian origin. Both of them Americans, but nonetheless Indian or subcontinental origins. And they said that we need to look at it in terms of capability. अब capability या क्षमता आधारित विकास की अवधारणा कि हम जब भी विकास की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मनुष्य की विभिन्न क्षमताओं को विकसित करने की कितनी संभावनाएं आपने राज्य में प्रदान की हैं. How many opportunities have you given for people to develop their capabilities? Now, again, इस कहानी की शुरुआत कहाँ है philosophy में? Where do you start the story of capability? शुरू नहीं होती है, यहाँ पे तो खत्म हो रही है.
It begins with Aristotle. It begins with Aristotle. It goes through Rousseau. It mediates through Marx. It comes through Amartya Sen, and then it goes to Martha Nussbaum. Martha Nussbaum is the most courageous of them because she actually talks about 10 capabilities, and she keeps on changing those capabilities. But and she is accused of being Western, hegemonic, and all sorts of things, liberal, homogenizing, etc. And the other very important woman, I think you should all read in this discussion, is Sabina El-Kheiri. Sabina El-Kheiri. She has a huge, in fact, there is a capability society in the world which talks about human capabilities, and there is a whole consortium of people all over the world who are talking about human capabilities. In fact, I did one interesting kind of a work on human capabilities, looking at actual women in the state of Uttar Pradesh and trying to measure human capabilities. We worked in 10 districts. We interviewed about 1,000 women and tried to see that. Again, a very empirical, non-philosophical work, but based upon the philosophical insights of capability. तो मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग इस तरह से चर्चा करते हैं जो कि अपने आप में ऐसा लगता है कि वो किसी कॉन्क्रीट टैंजिबल चीज के बारे में है, वहां पर भी हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारे दार्शनिक इतिहास और दार्शनिक चिंतन से कहां पर प्रभावित हो रही है। जब हम एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम फिलॉसफी नहीं कर रहे, लेकिन उसके पीछे के जो सिद्धांत हैं और उनकी चर्चा वो दार्शनिक है। So the capability theory is actually drawing itself from Aristotle and mediated through Kant, Marx, Rousseau, Amartya Sen, Martha Nussbaum, and that's the whole thing. And also Jonathan Glover and the others. So these are the people who are talking about human capability. और वो ये कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों के अंतर्गत कुछ क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं का एक मिनिमम विकास तो होना ही चाहिए, और उसके बाद और किस क्षेत्र में वो अधिक विकसित हैं उसके हिसाब से हम ये तय करेंगे कि ये राज्य या ये राष्ट्र अधिक विकसित है या नहीं। तो पहली बात तो ये थी कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो विकसित है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में विकसित जगह कौन सी मानी जाएगी? हरियाणा एंड पंजाब। But because they had maximum amount of money, or if you're looking at cities, the city of Mumbai, because that's the business capital of the country. But then they said that no, look at the other indicators, look at education, look at health, look at the gender thing, and then you started looking at it, then Haryana goes down and Kerala goes up. Similarly, globally, if you're just looking at money, then which will be the biggest, richest people? The countries of the Middle East. They'll have the maximum amount of money because they are the oil-rich people. But when it comes to health, education, equity, participation of women, they will plummet down, and then somewhere in Sweden, some small little place will fine. So the different ways in which you decide what is to count as development or not is also then going to decide who shall be where and how. So now they also started talking about like the Bhutan model of happiness index, and they are bringing all that sort of thing. Again, very complicated and interesting. But what are the philosophical underpinnings of all of that? It's very important that we as philosophers in the country, especially the young philosophers of the country, should continue to believe कि हम किसी भी चीज पर, क्योंकि ये बात होती है कि लोकप्रिय बातें एनवायरनमेंट पर सब लोग एनवायरनमेंट करने लगे, कोई पॉलिटिकल लीडर आ गया तो अब ये हो गया कि सबने विवेकानंद पे काम करना शुरू कर दिया, फिर अरविंद पे काम करना शुरू कर दिया, फिर ये हो गया किसी अम्बेडकर जी पे करना शुरू कर दिया, गांधी जी पे शुरू कर दिया, दीनदयाल जी पे। The point is आप किसी पे भी करें, the methodology and the issue has to be conceptual, because philosophy consists primarily in conceptual analysis. इस बात को सब लोग रिजेक्ट करते रहते हैं. There are papers written. Is clarity enough? Clarity may not be enough, but that is essential. Is analysis enough? May not be enough, but essential. So determining of the terms, analyzing the terms for anything. The moment you are saying that what is to look at, what is sustainable development? Sustainability in terms of what? So how will you define sustainability? How will you define development? That is the most difficult and important question, and that is where the philosophical heritage is useful. Data collection में तो philosophy आपकी कोई मदद नहीं करेगी. आपको उन प्रत्ययों के, जिन प्रत्ययों के माध्यम से आप चीजों को देखेंगे, उनके बारे में जो चर्चा है वो चर्चा दार्शनिक होगी. और जब आप उसको
एनालाइज कर रहे होंगे तो किन मूल्यों के आधार पर करेंगे? उन मूल्यों के संधान और अनुसंधान, अन्वेषण और चर्चा के बारे में जब आप करेंगे तो वो दार्शनिक हो। बाकी डेटा कलेक्शन और उसमें ये इतने 100 लोगों ने कहा, 200 लोगों ने कहा, 500 औरतें मारी गई और 2000 पेड़ काटे गए, दिस इज एक्चुअली नॉट फिलोसफी. So the question is that what is philosophical is of crucial importance, and I keep on repeating that because I think I remain one of the few people in the country of the old school which continues to believe that the philosophy needs to be done in the analytical style, where analytical philosophy is actually not a school of philosophy, but actually a metaphilosophical view, which says that actually the primary way of doing philosophy is to investigate, examine concepts, look at their interconnections, and then finally synthesize them. So that's so much so about the idea of development. So development can be measured in terms of welfare, in terms of care, in terms of justice, in terms of rights, and in terms of capabilities. And these are the kinds of things that you are looking at. And if you're looking at, say, for instance, as you mentioned, Martha Nussbaum, I would remind you that when Martha talks about the 10 human capabilities, where does she bring in environment? She also brings in environment. वो 10 कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर रही हैं. पहली है लाइफ, being able to live to the end of human life of normal length, not dying prematurely or before one's life is so reduced as to not be worth living. कि आप एक लंबा जीवन जी सकें जो कि स्वस्थ हो और वो बीच में इतना दुष्कर ना हो जाए कि आपको लगे कि अब मर गए होते तो अच्छा. Second is bodily health, being able to have good health, including reproductive health, to be able to be adequately nourished and to have adequate shelter. तो आप देखते हैं, कल भी आपने चर्चा की होगी कि भारतीय परंपरा के अंतर्गत भी सबसे बड़े दानों में क्या कहा जाता, अन्नदान की बात कही जाती है ताकि बॉडी हेल्थ रहे. इस समय के मौसम में सब जगह देखा था कि जल का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है गर्मी के समय पे. उसी तरीके से आश्रय कोई किसी को दे सके, शिक्षा का दान सबसे बड़ी बात मानी जाती है. The other is bodily integrity. It implies being able to move freely from place to place, to be secure against violent assault, including sexual assault, and domestic violence, having opportunities for sex satisfaction and for choice in matters of reproduction. इस सबको ये आजादी हो कि वो किस तरीके से रह सकें, अपने शरीर के साथ क्या करें, अपना पार्टनर अपनी तरफ से चुन सकें, शादी के पहले, शादी के बाद, और कोई जना उनके ऊपर असॉल्ट ना करे. ये सारी चीजें आप देखते हैं कि they all come in when questions of marital rape का सवाल उठता है, चाहे पब्लिक में लड़कियों के चलने का सवाल उठता है. हम लोग बात करते हैं कि अब बच्चे छोटे कपड़े पहन रहे थे, बड़े कपड़े पहन रहे थे, मतलब ऑल दिस क्वेश्चन कि कौन क्या कपड़े पहन रहा है, इसका लोगों से क्या मतलब. Everybody has their own right, and so this questions about bodily integrity, that nobody has any right not to touch me or even to stare at me. And then I think that's where you find, which I want to bring to your notice, senses, imagination and thought. सभी मनुष्य के अंतर्गत ये क्षमता है कि वो अपनी संवेद, अपने इंद्रियों का प्रयोग कर सकें, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकें और अपने विचारों का प्रयोग कर सकें, अपने विचार करने की क्षमता. So it should be possible for you to exercise all of them. तो जब हम ये कहते हैं ना कि बोलने की आजादी नहीं है, सोचने की आजादी नहीं है, तो आप अपनी संवेदना का प्रयोग नहीं कर सकते. तुम इसको नहीं छू सकते, उसको नहीं छू सकते. आप देखते हैं आप when you are talking about gender तो ये होता है नहीं नहीं अभी अचार नहीं छू सकते. क्यों नहीं छू सकते? What kind of a nonsense is this? छू नहीं सकते तो ये चीज डिनाइड है, वो उसको नहीं डिनाई, वो उसको इमेजिनेशन, आप ये कल्पना नहीं कर सकते, आप वो कल्पना नहीं कर सकते, आप विचार नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते. So all those things, these are human capabilities, and the fruition of that is going to decide. Because Marx ने भी ये कहा कि there are human needs and there are human ways of satisfying those needs. भूख आपको भी लग रही है और भूख जानवर को भी लग रही है, पर आप कुत्ते के सामने रोटी डाल देते हैं, आदमी के सामने डालेंगे तो उसकी भूख तो मिटती है, पर उसको लगता है कि उसकी मानवीयता का अपमान हुआ. So it's not just that you have a need, you also have a human need which has to be satisfied in a human way, which requires human dignity. And then there is this question of emotion, and this is again very important. Which Martha says, it is being able to have attachments, to love, to grieve, to experience longing, gratitude, and justified anger, not having one's emotional development blighted by fear and anxiety. कि इंसान के अंतर्गत ये ताकत है कि वो अपने संबंध बना सके, मोहब्बत कर सके, रो सके, सोच कर सके. जैसे कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि इस समय
पैंडेमिक के दौरान सबसे एक बहुत बड़ी तकलीफ हम सबको ये हुई कि आपके प्रियजनों का किसी का इंतकाल हो गया और कोई नहीं रहा, तो आप उसके पास भी नहीं जा पाए, उसका दुख भी नहीं मना पाए। लेकिन सभी जगह पे ये परंपरा होती थी कि मतलब हफ्ते भर तक तो हमारे घरों से दूसरों के घरों में खाना जाता है, फिर हम लोग जाते हैं, पूछते हैं कि तुमको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है, जाते रोते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, रिचुअलाइज भी कर रखा है, लेकिन बिना रिचुअल के भी लगता है कि नहीं उसके यहाँ हुआ जरूर जाएंगे। पर आप अपने सगे माँ बाप तक के नहीं जा पाए, लोगों ने कहा कि चला करते कि नहीं मत आइएगा, कोविड से उनकी डेथ हुई है। तो अपार्ट फ्रॉम सर्वाइवर्स गिल्ट देयर इज अ डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन कि हम कितने स्वार्थी और घटिया हो गए कि अपने शरीर को बनाए रखने के लिए हम अपने माँ बाप के लिए भी रो भी नहीं पा रहे। So the idea of the human capacity to grieve, the capacity to have attachments, to choose your own sexual partner, etc., etc. And then she talks about the sixth human capability, which is practical reason. Practical reason का मतलब क्या? Practical reason का हम कांट में फर्क करते हैं कि you can form your own conception of the good, you can engage in critical thinking, you can plan your own lives with your own liberty and conscience. और उसके बाद फिर she talks about affiliation. और यहाँ पर in the seventh capability, here is where environment comes. She says it is being able to live with and towards others, to have social interactions, to have capabilities of both justice and friendship. It would entail freedom of assembly, free speech, having social basis, self-respect, non-humiliation, being protected against discrimination on the basis of race, class, gender, sexual orientation, religion, caste, and the others. और इसी से जुड़ा आठवां, to have relationship with other species, to live with concern for and in relation to animals, plants, and the world of nature. कि हम प्रकृति, जानवर, पौधे, पेड़, इन सब के साथ भी संबंध बना के जी सके, ये भी हमारी एक डिस्टिंक्टिव ह्यूमन क्षमता है। और ये बात आप देखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि एंथ्रोपोसेंट्रिक हो रहे हैं, मानवीय केंद्रित हो रहे हैं, लेकिन मानव की ही ये विशेषता है कि मानव अन्य जानवरों के साथ, अन्य प्रकृति के साथ जीता है, उनके साथ कुछ काम करता है। और जिसको रविंद्रनाथ जैसे कहते हैं कि ह्यूमन सरप्लस, कि चिड़िया और तोता 1000 साल से वैसा ही घोंसला बनाते हैं, वैसे ही उनकी 4 आवाजें होती हैं कि अब डर लग रहा है, अब हमको अपना पार्टनर को बुलाना है, या बच्चे को भूख लगी है, 4-5 उनकी क्राइज होती है। पर इंसान ही वो एक शय है ऐसी कुदरत की, जो कि अपने घर बनाता है, सूरत बनाता है, अपने खाने बनाता है, उनको तरह तरह से स्वादिष्ट बनाता है, अपने मंदिर बनाता है, अपने खुदा बनाता है, खुदा को तरह तरह से तैयार करता है, उसके लिए अलग अलग गाने बनाता है, उसके लिए अलग। So it is the human creativity which is the human surplus, which distinctively makes us human. So it's not a matter of human arrogance, but it's a matter of recognizing that creativity is something which is distinctively human. Also, I may dare say, the idea of having second order emotions, meaning कि कोई चीज हुई उसके बाद आपको दुख हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों करा, गिल्ट, शेम, रिमोर्स, इस तरीके की कई बार हम लोग को लगता है कि हाँ हमारे घर के जानवरों में भी होता है कई बार कि आपका कुत्ता ने चिड़िया खा ली, उसने आपको फिर अगले दिन उठा लिया। लेकिन नॉर्मली एनिमल किंगडम से ज्यादा इंसान में होती है। अगर हम ये कहें कि उनमें बिल्कुल नहीं होती तो ये शायद गलत हो, लेकिन इंसान के अंतर्गत ये सेकंड ऑर्डर इमोशन की कैपेबिलिटी और उसके ऊपर पूरा का पूरा एथिकल सिस्टम बनाने का, तो ह्यूमन लैंग्वेज एनिमल लैंग्वेज से कंटिन्यूअस तो है, लेकिन बहुत अधिक एडवांस्ड है। उसी तरीके से ह्यूमन एथिकल बिहेवियर और ह्यूमन क्रिएटिविटी भी। So this whole idea of the capability of having a relationship with nature, and then one beautiful thing which he says, the capacity to play, खेलने, to laugh, to play, and to enjoy. And then she talks about the 10th capability related to what we're talking about, control over one's environment. अपने सामाजिक और प्राकृतिक environment, land, movable goods, right to seek employment, equal basis with others, freedom from unwarranted seizure, to be able to work as a human being, exercising practical reason, having meaningful relationships, and also then political environment, कि आप effectively political choices कर सकें, किसको आप चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं, free speech and association, इनकी बात करती हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि मार्था नुसबाउम इन
10 कैपेबिलिटीज के बारे में बात करती हैं, फिर उनके साथ 10 और कैपेबिलिटीज की बात करती हैं, और ये कई बार बदलती भी है। सेन जो है वो काफी बुद्धिमानी से और चतुराई से कोई कैपेबिलिटी का नाम नहीं लेते, वो ये कहते हैं कि हर संस्कृति अपने अपने क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को खुद चुनेगी. They will all choose their own capabilities, which I think is just one clever philosophical ploy of remaining at the level of the categorical imperative in the Kantian spirit. He doesn't soil his hands with the kind of difficulties which Smartha has to do, because and then I know Tina Cantor and the other सब लोगों ने कहा कि ये जो जिन क्षमताओं की बात कर रही हैं ये पाश्चात्य जगत की हैं, मानवीय स्वतंत्रता को पाश्चात्य लोग बल देते हैं, भारत के लोग तो बड़े खुश होते हैं, वो नानी काकी चाची बन के कि मेरी सास ने ये कहा, मेरी बुआ ने ये कहा, उन सबके साथ मिल के रहने में उनको बड़ा आनंद आता है. So, very tough. And so the idea of individual humanity and individualism is a Western idea, and the Indian people are very happy. I'm not too sure, because हजारों साल पहले थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों ने ये कहा कि वो दिन कितना सुंदर होगा जब कलयुग आएगा और मुझे चूल्हे चक्की से मुक्ति मिलेगी. और in cinema, you are I'm sure a lot of people who have seen Parama would remember that how she said that, I want to have my own identity. People who have read Rabindranath's Sri Patra would remember how that girl in an ordinary circumstance understands that you have no agentile function within the family system, where everything is decided by the family norms. You can't even make a decision about protecting somebody from violence. So much for what I just use this only to trigger off the discussion that when you are talking about development, and when you're talking about then sustainable development, the idea of development in its philosophical moorings can be looked at from multiple perspectives, and you can bring in to the discussion the philosophical elements, not just from the UN Charter, not from the statistics of the world, but from the philosophical repertoire and the philosophical history of contributions made to it by people from the philosophical history, whether it's Aristotle or Kant or Nussbaum or Kire or the Benthamites, and all of them, you can bring that to the fore. एक जो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है वो होता है इंडियन पर्सपेक्टिव, और मुझे लगता है कि इंडियन पर्सपेक्टिव में मेरा अपना मानना यह है कि मैं इंडियन हूँ और इसलिए जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है वो इंडियन है. उसके लिए मुझे वो शास्त्र सम्मत पर्सपेक्टिव को इंडियन पर्सपेक्टिव ही मानना अपने आप में मुझे लगता है कि एकांगी है. भारत के अंतर्गत अनेक प्रकार की चर्चाएं हमेशा से हुई, अभी भी हुई और अभी भी हो रही हैं, और मैं अपनी बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए एक बहुत बड़े विद्वान का नाम लूंगा जो कि बहुत ही डेयरिंग की बात है. आई रिमेम्बर यहीं लखनऊ में अट्ठापालिस में न्याय के ऊपर एक बार चर्चा हो रही थी, और ये बात हुई कि न्याय क्या देहात्मवाद को मानता है कि नहीं, और स्वयं बद्रीनाथ शुक्ल जी ने खड़े होकर कहा कि मानता है. फिर किसी ने कहा कि ये कहाँ लिखा है, उन्होंने कहा मैं एक न्यायिक हूं, मैं कह रहा हूं, इसलिए ये न्याय है. I think the point is should be very well taken. Why should Nyaya philosophy be the only confined to Jain Bharata? The whole school of Nyaya kept on developing up to the 17th century, and then Abhinaya was created. And so why can't it develop even beyond the 17th century into the 20th century? And why can't it be the case that a person like Badrinath Ji say that? It was I really was wondering, so similarly, I say the Indian perspective is mine. So all of us can say what we do, and therefore I would like to now take, in fact I thought that I'll actually divide my talk today into two sections. This is by way of my background and my understanding of development and philosophy. The other was, I want to discuss with you a little bit about philosophy and feminism. And in the third section, or the second section mainly, I'd like to do some kind of a discussion of eco-feminist discussion, in which I would especially like to make a distinction between eco-feminine and eco-feminist, where I think one major critique is that most of the discussion is actually eco-feminine and not eco-feminist, right? So the first we come to the question of
feminism and philosophy. And I'm wondering because my young friend Shant is not here. वो मुझसे हमेशा इस बात पे लड़ते रहते हैं कि आप फिलोसोफर हैं और आप इतने कठोर एनालिटिकल फिलोसोफर हैं तो आप फेमिनिज्म कैसे कर सकते हैं? So, and because that's so empirical, and again, a lot of people come to it from the continental persuasion. They use a lot of postmodern thing, etc., etc. So it's a constant kind of a struggle which I have, and I think all of you who are interested in feminism should look at also that who are the philosophy people who are doing work on feminism in India. Fortunately, I think I can think of at least 5 or 10 very important people who are doing very good work. And one of them is my teacher, Shefali Moitra. And you must all read her book on feminism. She was my first teacher of philosophy in life. So her book is on feminist thought, which talks about communication and everything. And it's an amazing book. और शुरू में तो मैंने उसको पढ़ा तो मैंने उसकी बहुत तारीफ करी, फिर मैंने उसकी एक बाद में एक कठोर आलोचना भी की. Yes, yes. It is published by Motilal Banarsidas. Yes, sir. My response. Oh yes, yes. I presented it at Jadavpur. I think it's published or not. I'll send it to you. In which I had actually taken feminism and philosophy, then a discussion of Moira Gattens, and the third section was entirely devoted to Shefali's book, where my concern was primarily with her praise of Val Flambeau and the others which I discussed today also. Warren. So Shefali Moitra is one very important Indian signature on feminist scenario. The other very important signature is again Asha Dee, who has also written extensively on this. The third, I think, was published through the Rydal is Vrinda Dalmia. Then I think there's Kanchana Mahadevan from Mumbai University. She has done also interesting work. The other is, again, I take the great pride, my teacher, Professor Vibha Chaturvedi. So she has written from Delhi University. And then a lot of other young people are doing, and I think Atushi is doing very good work in Jadavpur University. Yes, I am also one of the creatures who's working on, or who worked on theorizing as well as practical. Who else? Prayash, yes, yeah. Prayash is working on that, and then another person who's actually done very interesting work on, particularly looking at the Indian stories, not from professional philosophy background, is Chandrakala Patil, Banaras Hindu University, from the Department of Political Science. And another person again from Varanasi, who was the principal of the Vasanta College, Sushila Singh. A lot of people, of course, from the Department of Literature, including Shupriya Dev, Jadavpur University, Department of English. But from mainstream philosophy, I think there are, and my teacher again, Professor Rupekha Verma, who's work. So a lot of people, there are people who are working on questions of environment is of course one area on which I am very, very worried. And my worry is that most of the theses that I have checked, which have come to me from other universities, are actually half of the thesis consists on telling us that how much of air pollution, how much of water pollution, how much of sound pollution, a big amount of statistics, and then the last chapters are about from the sections from the Atharva Ved कि हमारे यहाँ तो पेड़ों को हम लोग पूजा करते थे, etc. I don't know, and I don't know whether Atharva Ved की वैदिक प्रार्थनाएं और स्टैटिस्टिक्स दोनों में से कोई भी फिलॉसफी है. Like, value given example of English learning. Even now in psychology and cognitive science, words of an expert, traditionally called after. We have been considered this as a quality. If there is an expert, I mean, who is saying something,
So I agree with Badri Vishal, even, but he has to be considered as an expert. Right. Even in modern cognitive science now in Western world, now they are also considering, at least in some fields like where they are talking about meditation and things like that, and empirically testing it with uh, psychological tools. What experts are saying, like Dalai Lama, that they are now considered it as a knowledge. Yeah. My question is a more sharp question. Is it philosophical knowledge? And so Because philosophical knowledge, to my mind, in the technical university system, of course, there are three uses of the term philosophy. One is any worldview. Two, the technical view, where we look at the science of review and analysis of concepts, where you have metaphysics, epistemology, logic, etc. Third view is again where you take the same poets and anybody who has to say something useful for you. In the university system, when we're talking about a technical view of philosophy, how do you look at these questions wherein the philosophical methodology is different from the method of the empirical sciences? Now, why are people a little hesitant sometimes even to admit Aurobindo as a philosopher? Because they say he's a mystic seer. But since he's not using the discursive argumentation like the Ramanuj in Saptopati, or like the Nagarjun, or like the Dignaz, or like Dharmakirti, therefore we would take him as a source of philosophical thinking, but not a philosopher. So this is a matter of cartography. It's not a matter of superiority or inferiority. And that is why, as researchers, I think we have to be very careful that what are we calling philosophy? Either that because of its content or because of its methodology. Similarly, knowledge, true. But is all knowledge philosophical? into the category of knowledge, but I think on the where issue, I mean, so where I was coming from there to this point was that so to say that this idea of the Rig or Rig Veda, there are even and other texts. So if you take rituals, I mean, there's a great debate, as you said, the whole mystical world was not considered philosophy for so long, and but we know that from very early proto times this has been considered as philosophy. And now we are teaching, when we teach yoga philosophy, now we are teaching proto-yoga first. So, if you consider rituals as philosophy and how you look at it, where we are lacking is, in my understanding, is, as you rightly said, maybe we have to develop a methodology to teach. That's where I agree. See, again, the point, and that's something which I will keep on insisting and harping upon till the end of my days. The discursive part is the philosophical part, which is, so when you are saying Brahma Satya Jagan Mithya, it's all right. But when you give an argument for that, the argument is the philosophical argument. When you say the Maya is Mithya, and when Ramanuj questions that and gives you 7 arguments for that, and then Shankar and the Shankarites give an answer, that is the philosophical debate. That, what is the nature of reality? If you have arrived at that, the question is again, have you arrived at it through intuition? What is the test of Aptata? Now, Aptopadesha Shabda, you are saying, what is the test of it? Either Sakshatkar, Tadvati Prakarakam. So, the test is not in terms of who is saying that. The test is actually representing the reality as it is. And therefore, and this is my question to Vian Jha all the time, I said, but finally you only have the pragmatic test. So why don't you accept the Buddhists? Because even when you are saying Tadvati Tatprakarakam, then I say, how do you know Tadvati Tatprakarakam? Then you are only saying that it performs a function. You have a functional argument. So if what you have finally is only the functional argument, why don't you settle with pragmatism? Why are you carrying this heavy load? This is my long-standing debate with Vian Jha. Anyway, so what I'm now going to share with you is a little bit of a debate with reference to philosophy and feminism. And what I'm going to call your attention to, that a lot of people, which is related to what we were saying, a lot of people complain about philosophy. जैसे आपने कहा कि proto योग की बात होती है, कई लोग आप देखते हैं जैसे कि जादव में भी
cognitive science as part of philosophy. And I had a talk with Jahavi etc. कि मैंने कहा कि तुम लोगों के पेपर में ब्रेन मैप्स वगैरह बने हुए हैं, ना तो तुम्हें पढ़ने आते हैं और ना तुम उसके बारे में कुछ जानते हो. उसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि ये आदमी जो था इसको एपिलेप्सी हो गई थी और वो कह रहा है कि देयर आर एक्सपीरियंसेस बट दीज आर नॉट माय ओन. आप पहले उसको जब पेशेंट डिक्लेयर कर चुके हैं तो उसके फर्स्ट पर्सन अलाउल का मतलब क्या है? लेकिन ये जो एक पूरा उत्साह है कि भाई हम भी अमेरिकन हो गए, हम ये कॉग्निटिव साइंस और थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस कर रहे हैं. थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस जब कर रहे हैं तो एम्पिरिकल थ्योरी में अगर आप चले गए तो इसका मतलब है आपने फिलोसॉफिकल डिसीजन पहले ये ले लिया अबाउट द ब्रेन माइंड आइडेंटिटी थ्योरी. फिलॉसफी केवल वहीं पर खत्म हो. ब्रेन के कौन से फंक्शन को थिंकिंग कहेंगे, ब्रेन के कौन से फंक्शन को फीलिंग कहेंगे, ये फिलॉसफी नहीं. फिलॉसफी की प्रॉब्लम तो सिर्फ ये थी कि क्या ब्रेन माइंड आइडेंटिटी थ्योरी है. वाइन की थ्योरी एपिस्टेमोलॉजी नेचुरलाइज में ये है कि एपिस्टेमोलॉजी अपने आप में नेचुरलाइज हो गई. ये फिलोसॉफी. अब आगे चलते मुझे ये बात सुझाने में कौन सा फाइबर, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एम्पिरिकल साइंस. The only philosophical part is that I have already made a decision that this is actually a mind-brain identity theory. And this is something that people are still not ready to understand. That in consciousness studies, what is the philosophical part? So philosophy has generally been accused. मेरी तरह की बात करते हैं. Philosophy के ऊपर आमतौर पर आक्षेप करता है कि आप बहुत ही एक प्रकार है, एब्स्ट्रैक्ट और दुनिया से गैर दुनियावी बातें कर रहे हैं और इसलिए फिर आप कर सके नहीं है आपको पैसा दिया जाए, पैसा देने से आपको कौन सी विजय प्राप्त हो जाएगी. इसलिए फिर टूट का तो इस तरह मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम भी पेड़ काटना रुकवाएंगे. In this section, I want to talk about that when we talk about the questions of philosophy, what are the questions? One question is, what is there? How can I be certain about it? What should I do? Because that is the original question in Socrates. What is a good life? How do I lead a good life? So I know, in order to know what is a good life, I must know who's good life. Human. What is it to be human? एक अच्छा प्याला क्या होता है, तो ये पता लगाना पड़ेगा कि प्याले का मतलब क्या होता है. फिर अच्छे बुरे प्याले का मतलब तय करेंगे. अच्छे चाकू का मतलब क्या होता है, जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके. तो एक अच्छे इंसान का मतलब क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंसान के क्या फंक्शंस हैं. तो इंसान खा भी सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, गा भी सकता है, नाच भी सकता है. और उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि मनुष्य जो है वो परफेक्शन को यूडेमोन बन सकता है. ये मनुष्य के अंतर्गत क्षमता है. तो ऐसी नैतिकता के बारे में भी चर्चा करें जो कि हमें वैसा बनने के लिए सोपान हमारे बताए हम. So this is the kind of discourse. So these questions seem questions of right here in the concrete world. तो एक तरह से ये बात भी थी कि ये सवाल कोई अपने आप में गैर दुनियावी नहीं थे. How do I lead a good life? What do I do for myself? Are concrete questions. But then we take these concrete questions to an abstract level, and that is where the philosophical discourse starts. So what is the ultimate nature of reality? What is the nature of knowledge? What is the nature of action? These are questions which seem to be far removed from the embedded context of the experience moving towards a certain a priorism. तो हम लोग को लगता है कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो प्रागैतिक हैं और वो हमसे दूर ले जा रहे हैं. और कुछ लोगों ने खासतौर से इस पूरे विचार को ये कहा कि ये आपका बहुत ही पॉजिटिविस्टिक विचार है, तार्किक भाववादी विचार है. हम लोगों को अक्सर ये कहा जाता है कि आप लोग उसी विचार से प्रभावित हैं. And against that, they said, Kineni, we will do genuine philosophy. And who are the genuine philosophers? The genuine philosophers are the ones who are talking about concrete experiences. So who seems most genuine? Most genuine. तो आप जब शास्त्र को पढ़ते हैं, कानून को पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि वो तो आपके दुख की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉस की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, पॉलीफोंटी की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, टच की बात कर रहे हैं. So phenomenology and existentialism seem to be far more intimately related to the concrete situations of the world as compared to the so-called analytical philosophy and scholars from the feminist persuasion have also called attention to the question that gender, power, knowledge are treated by philosophers, not treated by philosophers, and in some way or the other,
वो लोग ये सवाल नहीं करते हैं कि औरतें क्या कर रही हैं, शक्ति का संतुलन क्या है, और उनका ये कहना है कि इन सब के अंतर्गत हम लोग एक तरीके से मनुष्य की जिंदगानी, खासतौर से औरत की जिंदगानी को कोई जगह नहीं दे रहे। और उनका ये कहना है कि खासतौर से आपका जो मॉडर्निस्ट डिस्कोर्स है, इट हैज क्रश्ड, डाइवर्टेड एंड म्यूटेड ऑल अदर वॉइसेस व्हिच आर used. And one very famous work, because a lot of you have also worked on feminism, so you know that one very important article came in 1986 written by Sandra Harding, the feminist question, or the science question in feminism. And she is talking about three perspectives: from feminist empiricism, feminist standpoint theory, and feminist postmodernism. Feminist empiricism क्या कहता है कि अनुभव के स्तर पर हम ये देखते हैं कि लड़कों को सुविधाएं ज्यादा दी जाती हैं, लड़कियों को कम दी जाती हैं। इसको अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे तो यहाँ पर एक कहावत है, उसका नाम है बेटे को दूध बेटी को छाछ। So it's about distribution of goods and services to the girls that you are not giving them. But this is only at the level of, and they say कि अगर हम इसको ठीक करना चाहें तो it can be fixed very easily, कि दोनों को दे दो। So it's again mixed and stirred, more or less like this liberal feminist answer. The other is the question about feminist standpoint theory, which is actually saying कि सब लोग अपने अपने इतिहास के द्वारा प्रभावित होते हैं, स्त्रियां भी अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के द्वारा प्रभावित होती हैं, और उनमें उनका ये कहना है, जो एक तरीके के मार्क्सवादी चिंतन से भी प्रभावित है, कि जो सबसे कमजोर है और जो सबसे ज्यादा दलित है, जिसने सबसे ज्यादा त्रास सहा है, उसके लिए ये अधिक संभावना है कि वो दूसरे अन्य शोषित, वंचित और दलित लोगों की बात को समझ सके। और इस बात को वो कई तरह से जस्टिफाई करते हैं कि जब आप देखते हैं तो रानियों के दरबार में भी जो उनकी नौकरानियां होती थी, उनके साथ भी उनकी चर्चा होती थी, क्योंकि एक स्त्री होने के लेवल पर बहुत सारी वो बातें कर पाती थी अपने लेवल पर, कि तुम्हारा पति भी तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तुम्हारा देवर भी तुमको तंग करता है, तुम्हारी सास तुमको तंग करती है, खाने पे होता है। So at a level, the bonding of the women in the Antar Mahal. So, and this is written by A History of Their Own by Bonnie Morrison and others, that across countries and across history, women are a caste. वो एक तरह की जाति है। इस सभी स्त्रियां शक्ति में तो अलग अलग हैं, तो ये पढ़ी लिखी योग्य धनाढ्य स्त्री है, ये एक युवा बच्ची है, वो एक अलग क्षेत्र से आई हुई लड़की है, तो इनमें विभिन्नता तो है, लेकिन फिर भी अपने सानुरूप अपने लेवल के पुरुष के संदर्भ में, अगर ये अपने भाई, अपने पति, अपने पिता के संदर्भ में इनकी स्थिति और इनकी स्थिति एक सी हो, तो चाहे वो रानी हो, तो रानी है वो 7 भाइयों की बहन है, लेकिन उन भाइयों को मिल जाएगा राज्य, उसको सिर्फ कपड़े लत्ते गहने मिल जाएंगे, लेकिन सत्ता या निर्णय के अधिकारों के अंदर ये नहीं होगा। ये होगा कि हाँ हाँ आज क्या खाना बनेगा, लेकिन क्या स्त्रियां आज भी जो पैसे कमा रही हैं, हम लोग की जो पैसे कमाती स्त्रियां भी हैं, क्या वो अपने भाइयों, अपने माता पिता को अपनी तनख्वाह का पूरा हिस्सा उतनी आसानी से अपने पति को बिना बताए दे सकती हैं जितना पति दे सकते हैं? So on the ground level and all of that, so the situatedness of women and the positionality of women, they are saying that standpoint theory is saying that it's not privileging the position of women, but it is saying that women represent a standpoint, and epistemically we should privilege that position because it is more likely that they understand other people's position. This is the other position. And the third position is feminist postmodernism, which she talks about, and she says that feminist postmodernism में हम ये कह रहे हैं कि अलग-अलग स्वर हैं, स्त्रियों के भी अलग-अलग स्वर हैं, और उन सभी स्वरों को सुनना चाहिए। ये कि स्त्री है इसलिए उसकी बात को मान लें ये जरूरी नहीं है, लेकिन सुनने का तो मंच होना ही चाहिए। So it is not privileging the woman's position as the standpoint theory is, but it is saying that it must be heard and put on the dialogic table as one of the concerns to be negotiated. Now, many scholars have argued that the patriarchal discourse rests on the logic of exclusion, the either or, that there are binary, there's true, false, right, wrong, male, female, Indian, etc. And इस सारे डिस्कशन में ये एक बड़ी रोचक बात है कि ये लोग सारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ही निंदा कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ईस्टर्न सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है। हालांकि हम लोग को भी परीक्षा करनी पड़ेगी कि क्या
तथाकथित ईस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मूलतः भिन्न है या नहीं। कुछ फर्क तो होते ही हैं संस्थाओं के साथ। Plato, of course, is supposed to be the big criminal that he is accused of subtly separating different natural capabilities and aptitude. Socrates also describes philosophers only as men of exemplary courage, and औरतों के बारे में कहते हैं कि औरतें तो रोती रहती हैं और उनको हटा दो, जब वो मर भी रहा था उनकी बीवी को भगाओ यहाँ से। टीमियस में भी आप ये देखते हैं कि एक वो मिथ को वो रिकॉल करते हैं कि आदमी जो थे वो सुपीरियर होते हैं, औरतें इंफीरियर होती हैं। औरतें अगर अच्छा काम करती हैं तो अगले जन्म में वो आदमी बन के पैदा हो सकती है। जैसा जैनियों में भी माना जाता है कि प्रक्षालन स्त्रियां नहीं कर सकती, अच्छे कर्म करेंगी इस जन्म में तो अगले जन्म में आदमी बन के पैदा होंगी, फिर पूजा कर सकती हैं। बौद्ध भी ये मानते थे कि स्त्रियों के प्रवेश से संगत की आयु आधी रह जाएगी। बट इट इज इंटरेस्टिंग दैट जो फिलॉसफी की डेफिनेशन है एज लव फॉर नॉलेज, इस बात का जब हवाला दे रहे होते हैं सिंपोजियम में सोक्रेटिस, तो वो ये कहते हैं कि ये मेरी टीचर ने मुझे बताया था और उस टीचर का नाम डायोटीमा था। ये एक रोचक बात है कि बहुत सारे लोगों का जो ग्रीक स्टडीज के स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि डायोटीमा नाम की कोई औरत थी नहीं, वो एक काल्पनिक स्त्री। लेकिन ये भी एक बड़ी रोचक बात है कि अगर काल्पनिक भी थी तो एक स्त्री पात्र को लाकर उसके माध्यम से किसी चीज को प्रतिष्ठित करना अगर स्वीकृत था तो भी वो एक बात बताता। ठीक वैसे ही जैसे बाणभट्ट की कादंबरी में जब आप देखते हैं तो वो एक आती है लड़की और वो चांडाल कन्या है और वो संस्कृत में बोल रही है और सब लोग उसको देखकर चमत्कृत हो जाते हैं, जिससे कि ये पता होता है कि चांडाल कन्या भी राजा के पात्र में आ सकती है। तो these are fascinating accounts which complicate the issue of our perception as a single thing, कि सब औरतों को नहीं माना जाता था, दलितों को नहीं माना जाता था, so on and so forth. Now in Aristotle again you find that there is recognition कि औरतों में reason की capacity तो है, लेकिन क्योंकि वो दूसरों के अधीन हैं और अपने रीजन का प्रयोग नहीं कर सकती, because they cannot be their own masters, so like slaves and children, women cannot be active citizens. And again, the most unfortunate part in the history of Western civilization is Immanuel Kant, that he talks about women not being active citizens. He says that even Indian people can become masters of themselves, but women can never become masters of themselves, and they can never become. And this is so strange because he is the one person who's constantly saying, सभी मनुष्यों को कभी भी आप केवल उपयोग की वस्तु मत मानिए. Nobody should be treated as a means to an end, but an end in himself. But about women, he said that women are never full-fledged persons. Absolutely, absolutely shameful, because in theory and practice, this is what he's saying. In his political work, this is what he's saying, which is absolutely inconsistent with his other philosophical work, both in the metaphysics of morals as well as in the other major works, where he's talking about categorical imperative, he's talking about human dignity, and he's talking about. But this is, again, we are all very, very ashamed. But then there are other things. कई लोगों का यह भी मानना है कि पाश्चात्य सभ्यता में डेकार्ट ने जो बुद्धि और माइंड और बॉडी का सेपरेशन किया, वो अपने आप में इस चीज का सोर्स है कि आपने रीजन को प्रिविलेज किया अनरीजन से, और आपने पुरुष प्रधानता को वर्चस्व दिया, क्योंकि आपने माना कि पुरुष में रीजन होता है, स्त्रियां भावनात्मक होती हैं। और ये रूसो का भी था कि प्रकृति के अधिक करीब स्त्रियां हैं, वो भावनात्मक होती हैं, स्त्रियों को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, वो प्रकृति के अधिक करीब रहेंगी। जो सोफी को पढ़ाया जाएगा और उसको संसार का जो भयानक हिस्सा है जहां पर शक्ति है, उस शक्ति के संघर्ष में पुरुष भागीदार होगा और स्त्री करके काम करेगी और प्रकृति के अधिक करीब होगी। तो वो जो स्त्रियां प्रकृति हैं, और the unfortunate part here I think is, and this is I think I would like to share with all of you, which is I think nobody does that. पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी में, पूरे वेस्टर्न फेमिनिज्म में और पूरे हिंदुस्तान में भी ये एक बड़ी ऑर्थोडॉक्सी है, सब मान के चलते हैं कि डेकार्ट का माइंड बॉडी डुअलिज्म औरतों के दमन के सहयोग में बहुत वाज़ेह काम आता है। पर मैं सबको निमंत्रण देता हूं कि प्लीज डेकार्ट के
डिस्कोर्स ऑन मेथड और मेडिटेशंस के पहले 5 पन्ने पढ़ लीजिए और आपको ये मालूम चलेगा कि डेकार्ट क्या कह रहे हैं। डेकार्ट ये कह रहे हैं, जब वो माइंड और बॉडी को अलग कर रहे हैं तो वो रीजन को नहीं कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस, फीलिंग, सेंसेशन, ये सब कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। रीजन इमोशन की डायकोटमी नहीं है, रीजन और एक्सटेंशन की डायकोटमी। इस कारण डेकार्ट को मॉडर्निटी का पिता और सारे संसार के सारी बुराइयों का पिता मानने का जो एक लंबा परंपरा चले आ रही है, जिसमें कि सारी फेमिनिस्ट भी जुड़ी हुई हैं, इज रियली समथिंग प्रॉब्लमैटिक। उसी तरीके से कल्चरल सेंसिटिविटी न होने का आक्षेप भी बिल्कुल गलत है। डेकार्ट ने ये कहा, मैं भिन्न भिन्न राज्यों में गया, मैंने देखा कि जो लोग जिनको हम बर्बर मानते थे वो भी मॉरल हैं, जो हमारे जैसे दिखाई नहीं देते वो भी मॉरल हैं, लेकिन मैं इन सबों के बारे में चिंतन करते हुए यदि ज्ञान के आधारभूत पक्षों के ऊपर जाने की प्रयास करता हूं तो मैं आई थिंक देयरफॉर आई एम पर पहुंचता हूं। इट इज एक्चुअली नॉट अ डिनायल of the cultural specificity, but it is only saying that when it comes to epistemic final authorization, it will come from the Cartesian ego, which is again nobody wants to accept, but I have been trying to say that for long. The other question now I think is that जो कांट का एंटी इंस्ट्रूमेंटलिज्म जैसे मैंने बात कही, मार्क्स के बारे में भी ये बड़ी बात होती है कि मार्क्स क्या जेंडर को मानते हैं या नहीं मानते। और मुश्किल बात यह है कि मार्क्स को सब लोग अपने आप को यहाँ पे बहुत सारा मार्क्सवादी लोग कहते हैं, लेकिन मार्क्स को भी पढ़ने की जहमत कोई नहीं उठाता। और आपको ये पता होगा कि 1993 तक बहुत सारे मार्क्स का लिटरेचर ट्रांसलेटेड भी नहीं था बाकी भाषाओं में। तो यहाँ पर सब लोग अपने आप को मार्क्सवादी मार्क्सवादी कहते थे, पर पता नहीं क्या पढ़ा था उन्होंने, वही 5 ट्रांसलेशन पढ़ के जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ने छाप दिए थे बंगला में और हिंदी में, उनको पढ़ के अपना मनगढ़ंत कर। But this kind of naturalization of sexual division of labor is somehow there both in Marx and in Engels. And जो Engels की किताब है creation के बारे में, जो state के बारे में, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो private property है वो स्त्रियों के दमन से ज्यादा पुरानी चीज है। थर्डा लर्नर अपनी किताब में कह रही है कि नहीं, स्त्रियों का दमन और प्राचीन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो बहुत बाद में आई। वो मातृवंशात्मकता इत्यादि की बात करती है। पर ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्या मातृदेवी कहने वाले लोग जो थे वो लोग क्या औरतों का बहुत सम्मान करते थे? आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा प्राचीन मार्क्सवादी राज्य भारत का वेस्ट बंगाल है, और सबसे ज्यादा वृंदावन में जो विडोज आज भी आ रही हैं वो नदिया डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं। And I remember 5 years back, I listened to Gayatri Chakravarti Spiva, and she was talking about the necessity and impossibility of translation. और उसमें उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही, क्योंकि कई लोग थे जैसे ऐसे यंग बच्चे सुंदर सुंदर से होते हैं इनकी तरह के, वो कहते हैं भाषा अपने आप में दमन का बड़ा भारी वो है, भाषा को परिवर्तित करना चाहिए, हम लोग बेटे को लाल और बेटी के लिए कोई शब्द नहीं करते, भाषा के अंतर्गत लिंग भेद है, उसको हमें उसको शुद्ध करना चाहिए। वी हैव आवर लैंग्वेज इज वेरी पेट्रियार्कल। So she listened with great patience, and again, अब वो इतनी बड़ी हो गई है, so she said that look at Bangla. Bangla does not have a gender declination in its language. So लड़का भी खाता है, लड़की भी खाता है. But since the verb does not take the gender, to conclude that the Bengalis are not gender biased, he said, if you believe so, go and boil your head. So despite the fact that language does play an important role in the manifestation and the reinforcement of stereotypes, the question is, you cannot say that
if the language is purged, then automatically you will have a civilizational moral transformation. So therefore you have to look at the attitude, behavior, knowledge change, as they say, in terms of all of these. So this is insofar as I was looking at that if you look at the history of philosophy, then the history of philosophy has two elements. One, some people say that the history of philosophy, by privileging reason and deprecating emotion, has deprecated women and put men on a pedestal. The other people are also saying that individual philosophers have said nasty things about women, which is true. But about the first, which is the more philosophical argument, you need to be a little more careful. Is privileging reason necessarily a deprecation of women if it is not accompanied by the second argument, which is an empirical argument that women are not capable of reason? So in and by itself, it does not give you the result that is supposed to be. And that, I think, is an important thing which we have to look at as philosophy students and teachers. The only philosophers that I think of who are actively, consciously talking about the rights of women, to my mind, in our memory, and the जो university में हम लोग पढ़ाते हैं, is John Stuart Mill, Bertrand Russell, and the Benthamites. ये बड़ी रोचक बात है कि आमतौर पर सब लोग यूटिलिटेरियन थियरिस्ट को बहुत ही उपहास का पात्र मानते हैं, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, सिर्फ सुखवादी हैं, ये कह के सभी लोग उनका भोगवादी और ये सब कह कह के भारत के लोग संस्कृत में उनकी निंदा करते हैं. लेकिन but the fact is, when the utilitarians were saying each one to count as one and no more than one, they were actually laying down the foundations of democracy. Because in the earlier feudal society, राजा और धनाढ्य लोगों को वोट करने का अधिकार होता था और उन्हीं की बात को माना जाता था, साधारण जनता का कोई मूल्य नहीं था. और उन्होंने कहा कि यदि सुख और दुख ही नैतिकता का मानदंड है कि किसको कितना अधिक सुख हो रहा है, वो तय करेगा कि वो श्रेष्ठ काम है या नहीं. तो आपको तो आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, आप 25 साल के हैं, आप 26 साल के हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. और पहली बार इस तरीके का more or less scientific criteria in ethics was given by the utilitarians, and Benthamites ने ही पहली यूनिवर्सिटीज खोली यूरोप में जिनमें लड़कियों का प्रवेश हुआ. उसके पहले किसी यूनिवर्सिटी में यूरोप में लड़कियां पढ़ने नहीं आ सकती थी. आपको याद होगा वर्जीनिया वुल्फ को ऑक्सफोर्ड में दाखिला नहीं मिला और उन्होंने कहा sometimes it is better to be locked out than to be locked in. और फिर ये हुआ कि लड़कियां क्या लिख सकती है, नहीं लिख सकती. उन्होंने कहा लिख सकती हैं because writing makes no noise. लिखने में कोई आवाज नहीं होती. और यहां पर भी मुझे याद है कि महादेवी जी ने अपने संस्मरणों में लिखा था कि महादेवी जी और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों ने ये लिखा कि हम लोग कक्षाओं में कविताएं लिखते थे तो हमारी कॉपी को सबके ऊपर घुमाएगा, आगे वो कहेंगे सबने प्रशंसा की, उन्होंने नहीं, गंदी लड़की कविता लिखी. तो अपनी अभिव्यक्ति कर पाने की क्षमता रखने वाली स्त्रियों की गति परंपरा से लेके अब तक लगातार कठिन रही है. But Benthamites were the first people who actually did that, and they said that if you are talking about the greatest good of the greatest number, how can you exclude 50% of people? Their pleasure and pain will also count. So it's interesting that in that history, in that trajectory, you will find this. ये एक बड़ी रोचक बात है कि अभी जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हैरियट टेलर के बारे का क्या इन्फ्लुएंस रहा, ये वाली बात जॉन स्टुअर्ट मिल तकसीम करते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारा प्रभाव हुआ हैरियट टेलर का. हालांकि बड़ी रोचक बात यह है कि सार्त्र ने कभी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि मेरे ऊपर सिमोन का कोई प्रभाव था, और सिमोन के ऊपर सार्त्र का 0 प्रभाव था, और फिर भी वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने मुझे ये सिखाया, उन्होंने मुझे ये सिखाया. और अगर आप पढ़ें सिमोन की पहली किताब सेकंड सेक्स और उसके बाद उनकी दूसरी किताब पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि वो पहली किताब में कहती कि नहीं मुझे ठीक लगता था कि उनके अलग अफेयर चल रहे थे और वो कह रहे थे कि तुम भी चाहो तो अलग अफेयर चला लो, लेकिन दूसरी किताब में वो लिखती है कि नहीं मुझे बहुत कष्ट होता था. ये बात कहना बहुत आसान होता है कि हाँ नहीं तुम्हारा
बालक घुमा लोगों को, फिर रिश्ता कायम ही क्यों किया? या तो सिर्फ हम मित्र हों, लेकिन यदि हमारे बीच में कोई भी प्रतिबद्धता है तो कोई ना कोई लॉयल्टी का कोई तो करार होगा. So it's very interesting that when you look at men and women, one of the biggest things which I want to say, and which I'll come to in the next section immediately, is this: the non-acknowledgement of women has been almost a global phenomenon, including philosophy. कि औरतें क्या कर रही थी, औरतों का संस्कृति के निर्माण में क्या योगदान था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता. वो नारे से पूजनते पूजा तो करके आपने उनको फिर 7 दिन पूजा करी और फिर नदी में बहा दिया. But what are you doing? The question is that how are you actually recording the contribution of women to knowledge? Where is the contribution of women to knowledge? Now, on the Indian classical tradition, you can say कि नहीं, हमारे पास भामती है, हमारे पास पर वो कौन है? 1 2 कलावती, नंबर था भामती, गार्गी, मैत्रेयी, और उनका भी डिबेट क्या है कि मैं यज्ञ करके अपने खाल को सुंदर बना लूं इत्यादि. ऑल ऑफ दैट. पर वो 10 हैं, 20 हों, और कौन है ये? ऋषि पत्नियां, ऋषि पुत्रियां. What about the elite? भी नहीं है वो, पता नहीं, मतलब they all belong to a particular group. So what about the rest of the people? You know that globally they were nowhere. But it is interesting कि कम से कम recognition तो है. और आप ये देखते हैं कि कई अकाउंट्स आपको दक्षिण में भी तमिल सेंट्स के मिलते हैं, अक्का महादेवी वगैरह के भी, जिनको कि किसी बड़े गुरु ने उनको आश्रय देके विद्या के प्रति रखा, पर वो उनके हक से नहीं था. Not by rights, it was by exception. But again the point is, क्या ये philosophical theory थी या ये practice थी? क्या philosophically women were excluded या ये केवल बदतमीज लोगों ने कर रखा? And this I think is a very important argument कि कोई चीज एक philosophical argument से exclude की जा रही है या सिर्फ incidentally की जा रही है. This is again very interesting that जब आप सैंड्रा हार्टिंग को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बड़ी रोचक बातें लिखती है. वो कहती है कि न्यूटन एंड लॉजिक ऑफ फॉर्मल सिमेंटिक्स is also masculine. It is created by the defensive male who can only recognize negation and not difference. Scientific neutrality is misogynist. There are views which demonstrate anthropology's standardization, white maleness and society. और इस तरीके की बात वो कहते हैं. मोइरा जैकिंस की एक छोटी सी किताब है फेमिनिज्म एंड फिलॉसफी, वो सबको देखनी चाहिए. उसके अंदर शुरू की ही एक बात है जो मैं डिटेल में नहीं लूंगा, because I want to come to ecofeminism immediately. And that's a question where she said, there are two approaches which you can take. One, rejecting philosophy and its concerns. The other is extending it to the women's situation. So when you are looking at feminism and philosophy, you can take two stands. Either you reject philosophy and or you expand it. Now I want to come to the question of what we call ecological feminism. Or what is ecological feminism? जिसको हम कह रहे हैं पर्यावरणीय नारीवाद. This I think is should be taken as an umbrella which takes many perspectives, especially the multicultural perspectives, and which looks at the multiple ways in which there has been subordination. What is ecofeminism? इसको हम क्या कहें? पर्यावरणीय नारीवाद इसको हम कहें. इसके अंदर की जो मुख्य धारणा है वो ये है that women and nature are connected in historical, empirical, conceptual, literary, epistemological, methodological, theoretical ways. कि प्रकृति और स्त्री को हमने ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से, प्रत्ययात्मक दृष्टि से, अनुभवात्मक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, पद्धतिमूलक दृष्टि से आपस में जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि हमने ये कुछ चीजें मानकर रखी हैं. और यहां पर जैसे मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले रखा था, ये एक बड़ा सवाल है, वेदर इकोफेमिनिज्म इज फेमिनिस्ट और नॉट. क्या जिसको हम इकोफेमिनिज्म कह रहे हैं वो फेमिनिस्ट है या नहीं?
अगर वो फेमिनिस्ट है, और उसको फेमिनिस्ट हम केवल तभी कहेंगे जबकि वो मेल जेंडर बायस को रिकॉग्नाइज करती है and it focuses on the category of gender specifically. Dusra, is it ecological or not? And when we say it is ecological, then we would say, what are the ways in which it is ecological? Whether it recognizes organisms, individuals, populations, communities in its biospherical networks. तो अलग अलग ट्राइब्स के रहने वाले लोग, वेटलैंड्स, ऐसी जगह जहां पर कि कोई नहीं रहता, उन सब के साथ क्या हम अपने आप को जोड़ कर देखते हैं या नहीं? अगर देखते हैं तभी हम इकोलॉजिकल होंगे. And then it is said that it has to be multicultural because the women-nature connection in all over the world is different. There is racism, there is classism, there is ethnocentrism, there is imperialism, there is colonialism. And when you look at it, why do you call it feminist? You call it feminist only when you recognize कि एक ढांचागत तरीके से हमने स्त्रियों को सबऑर्डिनेट माना. इसके लिए एक छोटी सी बात को याद रखनी चाहिए. कई बार होता है क्योंकि ये बार-बार हम लोग एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. फेमिनिज्म कोई एक चीज तो है नहीं, लेकिन फेमिनिज्म को हम लोग आमतौर पर तीन तरह के वर्गीकरणों में देख सकते हैं. वन, एक वर्गीकरण है जो कि विचारधारा पर आधारित है, बेस्ड अपॉन आइडियोलॉजी. लिबरल फेमिनिज्म, रैडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, एक्जिस्टेंशियल फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म. इस तरीके के जो विचार हैं, या साइकोलॉजिकल फेमिनिज्म, these are based upon the ideological moorings by which, so this taxonomy or this classification is based upon the ideology from which the feminists are classified. The other is in terms of timeline. First wave feminism, second wave feminism, third wave feminism. The first wave feminism is generally supposed to be emphasizing on equality, the second on equity, कि हम लोग participate कर रहे हैं नहीं, and the third wave feminism is supposed to be working on the questions of difference. अब ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तरीके का अमेरिकन क्लासिफिकेशन है. अब यहाँ हिंदुस्तान में तो सब सेंचुरीज कोएग्जिस्ट हैं, अभी भी कोई लोग आदिम तरीके से रह रहे हैं, कोई जना सोलर कुकर पे खाना बना रहा है, कोई जना बुलेट ट्रेन में जा रहा है. So you can't say कि इंडिया में क्या फेमिनिज्म. The third classification is based upon region. So Afro-American feminism, Southeast Asian feminism and the others. Now what makes everybody a feminist? What जो सभी feminists में common है वो ये है that they recognize that women as a class are deprived, oppressed and marginalized. कि महिलाएं एक समूह के रूप में अपवंचित, दलित और उपेक्षित हैं. यूं तो आदमी भी उपेक्षित हैं, इंडिविजुअल, उनको कोई सता रहा है, उनका बॉस सता रहा है, उनका सुपरवाइजर सता, उनकी बीवी सता रही है, कोई भी सता सकता है. लेकिन they are not oppressed as a class of because of being a member of the base. So that's one. The second is that it is all supposed to be historical and structural, and the third is that we are committed to change. तो एक फेमिनिस्ट होने के लिए तीनों चीजें जरूरी हैं कि पहले तो आप ये माने कि ये सबऑर्डिनेशन है, दूसरा आप ये माने कि ये हिस्टोरिकल और कल्चरल है, और तीसरा आप ये माने कि इसको बदलने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. ये तीन चीजें सब फेमिनिस्ट में कॉमन. दूसरी बात क्या है, what is it that is very important, that we are asking three kinds of questions. सभी के मन में ये सवाल आता है. पहला, what is the reason of the subordination of women? जैसे हिंदुस्तान में सब लोग कहते हैं ना कि कुछ बात तो होगी तुम्हारे कि पहले आके तुम्हें तुर्कों ने मारा, फिर तुम्हें आके डच ने मारा, फिर आके तुम्हें ब्रिटिश मार के गए, अब आके तुम्हें अमेरिकन मार रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ होगी, तुम्हें सब मार रहे हैं. ऐसे ही महिलाओं के बारे में सब कहते हैं कि भाई कुछ तो तुम्हें गड़बड़ होगी कि तुम्हें हिंदुस्तान में भी मार रहे हैं, और पाकिस्तान में मार रहे हैं, और यूरोप में भी मार रहे हैं, और क्रिश्चियन भी मार रहे हैं, और जूश भी मार रहे हैं, और मुसलमान भी मार रहे हैं, और हिंदू भी मार रहे हैं. कुछ तो गड़बड़ होगी, है ना? So then there are different answers to this question, why women's subordination. So one is the naturalistic answer, which they again that biological determinism, जो फ्रॉइड का है, anatomy determines destiny. Then there are people who say कि reason की exercise आपको नहीं करने दी, इसलिए आपको ये मिला. अगर आप
कपड़ा पहनना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, लाठी भी न उठाना, जो भी कोई भी पुरुषोचित गुण थे उन सब का डेलिबरेट खंडन गांधी की पर्सोना में है। और इसीलिए जितने यहाँ पे जवान लड़के बैठे हैं डिसलाइक गांधी, एंड जैसे कि वो बड़ा मूछों वाला भगत सिंह और टोपी वाला चंद्रशेखर आजाद, तो ये बुड्ढा गांधी इज रियली बिकॉज ही वाज डेलिबरेटली गिविंग अ नॉन मैस्कुलिन identity to himself. And when he was called the Rashtrapita, he said, I would have been greatly honored if someday I deserved to be called the mother of the nation. If I were to be born again, I would like to be. So Gandhi has deliberately, from his dress to food to his practices, is completely feminized. He is not feminist, but he has taken the feminine mold. कि जो भी स्त्रियों के पक्ष की तरह चीजें होती हैं कि स्त्रियां केयर करती हैं, स्त्रियां प्यार करती हैं, स्त्रियां जानवरों की देखभाल करती हैं, स्त्रियां हिंसा नहीं करती हैं, स्त्रियां धैर्य रखती हैं. And when you read his biography, you see that how he squarely, fairly and honestly acknowledges कि जो पूरा उनका जो सबसे बड़ा मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन का, he got this lesson from his wife. कि वो मेरी बात कहता रहता था, वो सुनती ही नहीं थी. Didn't listen. And that's where I got the lesson of non-cooperation. That there's no need to protest. Don't cooperate. So Gandhi is one extremely example of feminization of politics. And for that, I think there is a very old article in Manushi many years back, I think 30 years back, 2 articles were written by Madhukishwar on deliberate feminization of that. And there's also a person who has done her work under Professor David Godavari Mishra, Devika, from Bangalore, who has done a research on Gandhi's eating habits, performance, and dress. Gandhi as a performer in public spaces. So it's hugely interesting to look at Gandhi in that particular way. The deep ecologists who speak about the connection of natural world without ego boundaries, they talk about a feminine woman. And they say that all women are thinking in a particular way, and then there is a question कि क्या सभी औरतें एक से सोचती हैं या नहीं सोचती हैं. Feminine values में फिर वही बात है कि आपने division बनाया nature, nurture, reason, emotion, man,
woman, और फिर इनमें डिफिकल्टी ये है कि इको फेमिनिस्ट इस बाइनरी को मानकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने एक तरफ की जगह दूसरी तरफ को भी उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए, और दूसरे लोग जो लिबरल थॉट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये बाइनरी ही गलत है, रीजन इमोशन का कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों है, रीजन इमोशन एक ही कंटिन्यूअस है, नेचर नर्चर एक ही कंटिन्यूअस है, मैन और वुमन एक ही कंटिन्यूटी है. So they do not interrogate that, and that is the problem. There is again the idea of the loving mother and loving nature, etc., etc. And Susan Griffin has 2 articles, I think, which you must all read because you are doing environmental studies. One is called Women and Nature, The Roaring Inside. This is 1978, and there's a rather sharp article which is called Ray, The Power of Consciousness, 1979. And it says that women understand the exploitation of nature better because they experience it on their own bodies. And as I said, जो हमने शुरू में Sandra Harding के reference में देखा था, this is actually more in position of the second position, which is the standpoint theory. That from the standpoint theory, because she has 3 positions, one is in feminist empiricism, standpoint theory, and feminist postmodern. So this is more in terms of that, and also Nancy Hartsock is saying much the same kind of thing. So there is a constant concern about non-recognition of women's contribution to all areas of knowledge. और यहाँ पर एक बड़ी important बात है, जिसको ये philosophy और feminism के संदर्भ में हम लोगों को बार-बार याद रखना चाहिए. औरतों के बारे में philosophy के संदर्भ में इनके कई तरह के आर्गुमेंट, जैसे मैंने आपके पॉवर गैथन्स के रेफरेंस में 2 बताए, उसी तरीके से इन लोगों का ये कहना है कि आपने 3 चीजें की, ट्रिवियलाइजेशन, इरेजर एंड होस्टिलिटी. कई बार आपने कहा कि औरतें जो कह रही हैं वो कम इंपॉर्टेंस का है, दूसरा आपने ये कहा उसको सुना ही, और तीसरा अपरेंटली आपने होस्टिलिटी, मतलब ये तो द स्क्रिप्चर्स, सारी दुनिया के स्क्रिप्चर्स आप देखिए, यहाँ पर भी देखा जाएगा कि वो ग्रामर का एक रूल बदलने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो पाणिनि ग्रामर में एक रूल बदल देता है तो वो इतने बड़े सुख के जैसा है जैसे कि किसी को पुत्र का oops. Why are you doing that? And even some best writers, when they talk about women, it is so in terms of their bodily shape, and it's sometimes very embarrassing. But there is a trivialization of the woman's consciousness and contribution. Second, there's an erasure. You don't want to listen to what they are saying. Second, thirdly, there's hostility. So in environmental philosophy also, and this is where I want to draw your attention, because all of you are already people who have worked on environmental. Some of these feminists are now saying कि environmental philosophy भी जब आप कर रहे हैं तो आप किन लोगों का नाम ले रहे हैं? आप डीप इकोलॉजी में आने नाइन का नाम ले रहे हैं, बाकी आप किसका नाम ले रहे हैं? एल्डो लियोपोल्ड का नाम ले रहे हैं. What about people like Ellen Swallow, Rachel Kazan, Barbara McIntosh? इकोफेमिनिज्म में भी आप कितनी औरतों को जानते हैं? इसी तरीके से in terms of omissions, they are saying कि आपने औरतों की जिंदगानी के जो महत्वपूर्ण हिस्से थे, जैसे बच्चे होना, प्रजनन, procreation, childbearing, sexuality, women's work in the private sphere, politics of the personal politics, इनके बारे में आप कुछ बातें नहीं करते, जैसे कि कुछ होती ही नहीं. So philosophy is talking only about the public world, the polis, not the oikia. And that was, in fact, one of the most important voices of feminism, that the personal is the political. Within the domestic sphere, the way we are related to each other is important. So this is the second very important point that they are talking about omissions, about the things which are not considered by philosophy. The difficult question is that how can philosophy treat this? Because philosophy, as I said, even for people like me, is about the abstract principles. Now, how can you take the issues of childbearing, of procreation, of sexuality to that level? So it becomes difficult. And here also in the Indian side also, you find detailed accounts of that in the Smritis. But you would not find that in the Shrutis and in the other main Sutra Granth. Now, there are the other question where people are talking about that how are women impacted by the environmental factors? So जब पेड़ कटते हैं
तो किसको क्या तकलीफ होती है। तो उनका ये कहना है कि when you are looking at poor women, फायरवुड लाना, पानी भर के लाना, तो आदमी औरत के दोनों के जीवन में इन सब चीजों का अलग भूमिका होती है। तो जब जंगल में से आपको निकाल दिया गया तो आपको बहुत दूर दूर तक जाना। There is a study, very interesting study by Beena Agarwal, that how different communities are impacted. कुछ लोगों को ये होता था कि बच्चे उनको चाहिए ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी लकड़ी काट पीने के लिए एक जना जाएगा, पानी लाने के लिए एक जना जाएगा, और कमाने के लिए एक और जना जाएगा। और फिर जब जंगल खत्म होने लगे तो फिर उन लोगों ने कहा कि और बच्चे पैदा करो। एक कम्युनिटी ने ये करा कि बहुत मुश्किल हुआ जा रहा है तो बच्चे कम पैदा करो। So how environmental hazards have impacted communities is also not simple. There's not a simple kind of a thing. Different communities have reacted differently to it. And how women are impacted by water resources, by land resources, by availability of firewood, and etc., is very. And they are saying that this feminization of nature and naturalization of women are both subjected to invasive technologies. And in that, one of the things which I want again before I close after a little while is the kind of question that I want to raise about this question of motherhood, Mother Earth, women as mothers. And in that, I would remind you of one very interesting American writer called Adrienne Rich. And she has a very beautiful, she has written extensively, but one of her books is called Lies, Secrets, and Silence. And as a radical feminist, she has one very important thing to say about motherhood. क्योंकि यहाँ तो सब लोग कहते हैं ना, माँ है, औरत की माँ की प्रशंसा करो क्योंकि वो माँ है। I remember I wrote one paper on Vivekanand ji where I was criticizing him with reference to radical feminism. And I was reading that in Varanasi, and Hemlata Swarup was chairing my session. She said कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी paper पढ़ने की, they will kill you. But I wrote one paper on Ambedkar also criticizing him, which I read in the Ambedkar University. So, but my point was that विवेकानंद भी ये कहते हैं कि कौन सा ऐसा बंगाली आदमी नहीं है जो कि सुबह उठ के अपनी माँ के अंगूठे को धोकर अपने मुंह में नहीं पानी पीता। अगर मैं ऐसा होता कि मैं इस संत समाज का सदस्य ना होता और मैं शादी करता, तो फिर मैं अपनी स्त्री से कहता कि तुम मेरी माँ का सम्मान करो। जब तक तुम स्वयं माँ न बनी हो तब तक कोई अधिकार नहीं है मेरी माँ की अवज्ञा करने। These remarks from Vivekanand, and he's the same Vivekanand जो कि ये कहते हैं कि सती के बारे में तुम कौन होते हो बोलने वाले, क्या तुम स्त्री हो, स्त्रियां खुद निर्णय लेंगी। So you find that there is a huge amount of multiplicity of voices within the same person as well. But motherhood is hugely glorified. कि गांधी जी भी कह रहे हैं कि औरत को पढ़ाते हैं तो आप पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, आदमी को पढ़ाते हैं तो आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं। सर सैयद कहते हैं माओ, बहनों, बेटियों। So everywhere motherhood is greatly celebrated. Now the question is very, very difficult. How is motherhood seen by women? औरतों के लिए मातृत्व अपने आप में क्या है? जितने लोग भी ध्यान से देखते हैं और जितनी भी स्त्रियां अपने अनुभव को बताती हैं, उनको ये पता है कि बहुत ही कष्टप्रद स्थिति है, बहुत ही कष्टप्रद स्थिति है। जो स्कारलेट ओहारा ने कहा था, नो वुमन इन हर सेंसेस वुड एवर एक्चुअली प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इट्स सो पेनफुल कैरिंग समथिंग। आप किसी भी आदमी के ऊपर, मैं आप सब लोग, हम लोग जब ये अभ्यास कराते थे फेमिनिस्ट डिस्कशंस में, हम कहते हैं आप अपने यहाँ पर एक तकिया लगा के 10 मिनट ऊपर से नीचे तक करके रखिए, जो कि 9 months the woman is carrying that and suffering all sorts of things. आप अपने मुंह के ऊपर एक रुमाल डाल के आधे घंटे चल के दिखाइए, जो आप सबने अपनों को इतना बड़ा घूंघट करा। It's absolutely painful, very, very difficult. But Adrienne Rich has this to say: the experience of motherhood is very satisfying. तमाम कष्टों के बावजूद स्त्री को मातृत्व का अनुभव अपने आप में बहुत ही फुलफिलिंग होता है। And interestingly, मोइरा गैपिन्स का ये कहना है कि आदमी औरतों से जलते हैं क्योंकि उनको मातृत्व का अनुभव नहीं होता, इसीलिए उन्होंने अपने जगत को निष्पक्षता, बौद्धिकता से संयोजित किया है, क्योंकि उनको वो अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। और इसीलिए उन्होंने अपनी ये सूखी सड़ी फिलॉसफी बनाई है, जिसके अंदर वो लोग ये तत्सम तद्भव और हमारी तरह इप्रायरिज्म बात पे पर्चे लिखते हैं about close analysis and the others, because we do not have the experience of creation.
women have experience of creation within their own body. And this is, when I read that, I found it extremely surprising. But then I found that this is actually coming from the existentialist phenomenologist perspective of Moira Gattens. एड्रियन रिच का ये कहना है कि एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड इज वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि आप एक अन्य व्यक्ति को अपने अंदर पोषित कर रहे हैं और उसको वो आप आगे चलकर वो बच्चा कुछ भी करे, आपको मार के निकाल के दे, फिर भी आपको पता है कि वो मेरा है, वो आपकी रचना है। तो ये जो बोध है और ये उसको बनाने का कष्ट और सुख, रचनात्मकता का जो ये बोध है, ये तो अपने आप में बहुत ही एनरिचिंग है। पर मातृत्व का अनुभव जहां पर एनरिचिंग है, मातृत्व की संस्था अपने आप में आपको बंदी बनाती है। तो दो द एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड इज फुलफिलिंग, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मदरहुड इज इनकार्सरेटिंग। कि आपने कहा कि मां होने में ही तुम्हारी इतिश्री है, तुम अगर नहीं बनती, नहीं बन सकती, बन गई हो तो उसके इतर अपने बारे में कुछ सोच रही हो कि अब तुम गाना सीखोगी, अब तुम नृत्य करोगी, अब तुम कहीं घूमने जाओगी, तो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी होगी। बच्चे का हाई स्कूल का इम्तिहान था, वो सेमिनार अटेंड करने चलेगी, उससे ज्यादा तो दुष्ट स्त्री कोई हो ही नहीं सकती। So incarcerated in the institution of motherhood, which actually leaves no scope for the woman to have her identity beyond her motherhood, is the problem. The problem is not with motherhood as experience, but the problem is of motherhood as an institution. And then there are the whole questions which they have in radical feminism, that how is motherhood constructed? Different civilizations have constructed motherhood in different ways. So there is a glorification of motherhood, great glorification, appreciation of motherhood, but there is also a certain kind of a reductive essentialism which is problematic. तो ये वाली बात भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी। उसी तरह से प्रकृति के संदर्भ में भी लगभग यही बात है कि प्रकृति हमारी माता है, प्रकृति है, but no sense of agency, and this is the kind of discussion which people are now being encouraged to see. The environment philosophers also seem to have the same kind of thing. So from Aristotle to Hegel to even to Wittgenstein, ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि विटकिंस्टाइन का भी ये मानना था कि औरतें बिल्कुल फिलॉसफी नहीं कर सकती, वो सिर्फ प्रोफेसर को खुश करने के लिए घूमती रहती है। मतलब इतनी ऐसी उन्होंने बेढंगी बातें कही थी कि रसल ने उनको बहुत डांटा कि इतनी मूर्खता की बात मत कर। But this has been a part of the male culture all through. So this question of misogyny and decontextualization is very important. Karen Warren speaks about some boundary conditions of all ethics, and she says कि जब हम environment ethics कर रहे हैं तो हमें कम से कम 8 अलग-अलग बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1 contextualism, 2 inclusiveness, 3 non-traditional values, love, care, friendship, first person narrativity, transformed reconception, and also to understand interspecies relationships, विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध। So हमें यहाँ पर 2 चीजों को देखना है, एक नेचरिज्म, सब चीजों को प्राकृतिक करने का संदर्भ, and the other has to look at feminization of nature, प्रकृति का स्त्रीकरण और स्त्री का प्राकृतिकरण, और इन दोनों के अंतर्गत आधिकारिकता का देखना। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक जेनेट बेल नाम की एक स्कॉलर हैं, उन्होंने सारे इकोफेमिनिज्म के ऊपर 5-6 बिंदुओं पर आलोचना की है जो सब अपने आप में ध्यान देने योग्य है। एक तो उन्होंने ये कहा कि आप सारी जो फेमिनिस्ट हैं वो बराबर ये कहते रहे कि ये वेस्टर्न पेट्रियार्की का नमूना है, वेस्टर्न पेट्रियार्की का नमूना है। ऐसा लगता है कि नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में ऐसा नहीं है, और जो मुझे लगता है कि इंडियन पर्सपेक्टिव में हम लोगों को भी देखना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ प्रकृति के दोहन, प्रकृति के ऊपर पुरुष के प्रभाव की वैसी ही मान्यताएं नहीं है जैसे कि बाहर है। दूसरी बात उनका ये कहना है कि आपने ये जो माइथोलॉजाइजेशन कर दिया कि प्रकृति देवी है और औरत देवी है इत्यादि इत्यादि, ये इकोफेमिनिज्म में ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तीसरी चीज वो कहते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म,
कि औरत में ही धैर्य होता है, औरत में ही सुपोषणा प्रवृत्ति होती है, औरत ही केयर कर सकती है. दिस biological essentialism is also a problem. Third, socialization. लड़के और लड़कियां एक ही परिवार में पैदा हुए हैं, तो लड़कों को भी वही मूल्य मिल रहे हैं जो लड़कियों को मिल रहे हैं. तो लड़की नॉन पेट्रियार्कल होगी नहीं होगी, लड़की भी वो ऐसी होगी जो कि उसको भी यही बचपन से सिखाया गया है कि लड़का सुपीरियर होता है, लड़कों को ये करना चाहिए. तो she has also learned the same lesson. So patriarchy is not the lesson which has only the boys have learned. The girls have also learned the same lesson. So to imagine that women have some other native, spontaneous ways of thinking is also a problem. This is her criticism. And then she said that there's a certain kind of incoherence in the theory, and there is no clear ethical theory. One of the things which also I have to admit and say, which I have been trying to say against many of my teachers is that postmodernism और डिफरेंस के महत्व को बताते हुए फेमिनिज्म में, दलित स्टडीज में, पुअर लोगों के स्टडीज में बहुत सारी बातें ये बात सही कही कि कई स्वरों को हमने वी हैव नॉट गिवन स्पेस टू देम इन द मेन. और उसके साथ ही साथ एक और बात जो कही जा रही है वो ये कि मेरी बात को दूसरा नहीं समझ सकता. सो द मेन कांट अंडरस्टैंड वुमेन, द रिच कैन नॉट अंडरस्टैंड द पुअर, the Brahmin cannot understand the issues of the Dalit. इसमें मैं फिर अपनी बात को खत्म करने से पहले ये वाली बात याद दिलाऊंगा जहां से हमने उसी दार्शनिक को याद करें जिसको हमने कई बार इमैनुअल कांट. और उसमें क्या था, सारी एथिकल थ्योरी के लिए क्या जरूरी है, ought implies can. आप वही करने के लिए कहे जा सकते हैं जो आप कर सकते हैं. अगर आपने कहा कि पुरुष स्त्री की व्यथा को समझ ही नहीं सकता, तो वो स्त्री की व्यथा को दूर करने के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया. अगर आप ये कहते हैं कि अश्वेत लोगों की पीड़ा को श्वेत लोग समझ ही नहीं सकते, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि रेसिज्म गलत है. तो इफ यू डिनाई एपिस्टेमिक एक्सेस टू द पोजीशन ऑफ द अदर, then instead of serving the purpose of that, you have made it impossible. And this is something which we need to understand, that understanding differences is at a peripheral level, at the level of operations, and at the level कि ये देखना है कि ये इन्होंने लस्सी दी तो ये मुझे भी दी, इनको भी दी, अगर ये लैक्टो इंटॉलरेंट है तो इनको नहीं देनी चाहिए थी, इतनी बात तो ठीक है. पर अगर आप ये कहें कि नहीं, हर डिफरेंस, it's impossible for one to understand the other, you make impossible the very functioning of any moral injunction, because all moral injunction rests on a certain principle of universalization. So many scholars clarify that ecofeminism is one very important part of embodied materialism, and in one sense it is actually not feminist but womanist. I would like all of you to think about these things and then try to see that what are the connections that you find between mainstream philosophy, ecological thinking, ethical thinking, and certain other very important movements of the world like global peace movements. जो global peace की बात कर रहे हैं, आज से 6 महीने पहले there was a conference in Baroda where 3 of the biggest people in social sciences were talking. There was Upendra Bakshi, there was Bhikkhu Parekh, and there was Ashish Nandi. And they were saying कि हम लोग इतने वर्षों से human rights और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, पर इस समय जो सबसे कठिन परिस्थिति ये है, वो ये है planetary extinction. किसी भी दिन आपका संपूर्ण planet destroy हो जाए. ऐसे संदर्भों में मानव अधिकार, स्त्री अधिकार, बाल अधिकार, इन सब की चर्चा का पुनर्परीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब अपने आप को इतना अधिक बांट लिया है कि हम उन ग्लोबल चीजों को, जैसे इस समय जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेट्स हैं, वो किस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गवर्न कर रहे हैं, उसके रहते आपकी फिलॉसफी को ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या से लेके यूटिलिटेरियनिज्म का क्या करें? हाउ डू यू फाइंड योर इन्फ्लुएंस which would make a difference to the transnational corporations which are only doing 2 things right now, producing arms
and supporting pharma industry. So the scare of the pandemic, ये लगाओ, वो लगाओ, फिर booster लगाओ, फिर mask लगाओ, all of that, and the other question of global destruction. इनके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? Does your philosophical theory equip you to think about it? And what are the parameters in terms of it? Because what has happened is, जो आपकी पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग थी उसने आपको इतना डिवाइड कर दिया था कि नहीं वो इस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, वो उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, वो इस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, वो उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में जो भी बात कर रहा है वो हेजेमोनिक है, वो मेल सेंट्रिक है, रैशनलिस्टिक है. दर्शन अपने आप में आपको एक तरीके से संसार से काट रहा है. I still plead that the good old ideas of modernity, the ideas of philosophical analysis, the idea of distancing yourself from the immediate and looking at things from a perspective is still the most important thing. And therefore, I still think that liberal education, democratic polity, environmental protection, and philosophical analysis go very closely hand in hand. While these personal narratives of anguish and deprivation are important, but they are important only for the specific purpose. Thank you. So any questions that you have? Excellent. When the presentation starts with the question whether ecofeminism is feminine or feminist, I have 2-3 observations, sir, in addition to your criticism against ecofeminism. As an academic discourse, ecofeminism has been conceptualized as a part of the field of environmental ethics along with deep ecology. And also social ecology, not shallow ecology. Because shallow ecology is not feministic, but somehow deep ecology is feministic. And there is a beautiful article written by Bham Pamud, even Karen Warren, and Brenda Almond. Oh, I mean Bandana Siva to some extent. I mean when she was talking about biopiracy. But it is very rare to find mentions of ecofeminism in Women's Studies Center. Very rare. I mean, you cannot find a single book on ecofeminism in Women's Studies Center. So, do you think that ecofeminism is marginalized, sidelined, ignored from the main source of feminist philosophy? This is one more addition to your. There is a article given by Noel Sturgeon. That name is Ecofeminist Nature, Race, Gender, Feminist Theory and Political Action in 1997. I quote, she writes, "Such is the prejudice against ecofeminists among many academic feminist theorists that I was once advised by a prominent feminist theorist who wanted to support my work to remove the word ecofeminism from the title of one of my papers, published papers about the movement, because she said she would never choose to read an article about ecofeminism. And I had been advised by a feminist mentor to leave my editorship of the ecofeminist newsletter off my vita when applying for grants or jobs." I mean, this is the view given by Noel. Even if you go to Cameron, David Cameron, First Mother and the Rainbow Children in 1989, he said, the term ecofeminism is an insult to the women who put themselves
on the line, risked public disapproval, risked even violence and jail. Feminism has always been actively involved in the peace movement, in the anti-nuclear movement, and in the environmental protection movement. I mean, whether feminism is a theory or feminism is a movement. Now, ecofeminism, how can you just throw out your all prejudice or how can you say that? I mean, ecofeminism is not feminine. I mean, do you think that we are humanizing nature or naturalizing women? That is a very controversial point. And even one more point, sir. Ecofeminists claim that okay, there are 8 varieties of connection between ecology and feminism because the domination given domination by man on women and the domination by man on nature or ecology are identical. I mean these are the how that may be true. That domination is identical. That may be true. But women also participate in patriarchy and its oppressive practices. How many ecofeminists are vegetarian? I mean, there is an article given by Cora Diamond, eating meat, eating self. I mean, Cora Diamond was talking about the cosmetic industry is a very beautiful example, as you have already mentioned, sir. The testing of cosmetics on animals is a barbaric and cruel, generally unnecessary practice. And though the issue is complicated by questions of women's bodily disciplines and image in the context of patriarchy, women cannot deny their support of such practices through their buying power. Daniel Dattridge wonders that what the feminine principle would imply for Dalits, for the tribals, for the Muslims, for the Christians, for the Sikh and the other minority communities. How can you marginalize them? How can you, it's not a watertight compartment. How can you, how this feminine principle would imply for this community? Furthermore, if you want, in addition to that earlier principle, ecofeminist does not analyze religious controls over women when they discuss the Shakti concept of religion. So, in your presentation, you said that, it does not follow. But if I don't respect Mother Earth as mother, what will follow, sir? If I say that my Janani Janma Bhumishcha Swargadapi Gariyasi, if I don't say that, what will follow? If I say, then there is some kind of respect. At least respect follows. But if I don't say, then what will follow? These are my some observations, sir. I'm a very small person, but doing all these things. But being a coordinator, these are small questions to you, sir. All of them very. I think I have some time. Yes, A few things that I want to. Let me begin with the. I don't know. These are difficult times. I don't know. I don't know whether I want this to take or not. This whole thing about Janani Janma Bhumishcha Swargadapi Gariyasi. Wait a minute. You see that you do not say Janani Janma Swargadapi Gariyasi. What happens? I would say what happens is. Yatra Vishwa Eka Nigadadhara. So, the question of nationalism and humanism have been amply debated, and we also know that the kind of idea of respect for where you are born is very important, but how it can sometimes become a hostility towards the other and how it can become parochial is also very well known. And therefore you saw in Tagore the whole question of the religion of man and the religion of the poet. And you see in the Tagore-Gandhi debate where Gandhi constantly keeps on saying that Tagore is right, but he's a poet, and in the political expediency we have to accept the idea of the nation state. That's all. But the other question is about
And this, I think, is often being said, including the fact that I think 2 weeks back, in the inaugural address of Morals Matter, Professor Miri also said that, in the Western culture, mainly because of the Western religion, again, this is a peculiar thing. How do people look at geography? Which is the Western religion? एक तो दुनिया गोल है, तो ईस्ट वेस्ट कुछ होता नहीं है. दुनिया के बीच में से जो चीजें वेस्ट, हम कुछ लोग यूरोप के वेस्ट में हैं, कुछ लोग, तो हम क्यों अपने आप को ईस्टर्न में हैं? एक तो ये बात. दूसरी बात ये, जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं दुनिया के, वो कहाँ पैदा हुए? इस्लाम कहाँ पैदा हुआ? हमसे थोड़ा सा ऊपर. बुद्धिज्म कहाँ पैदा हुआ? हमारे यहाँ पैदा हुआ. जूइश रिलीजन कहाँ से पैदा हुआ? हमसे थोड़ा ऊपर. ईसाइयत का यूरोप से, अमेरिका से कोई दूर दूर का संबंध नहीं था. क्रिश्चियनिटी का जो पहला क्रिश्चियन चर्च था वो हिंदुस्तान में मद्रास में बना था. तो वेस्टर्न कौन सा रिलीजन होता है? देयर इज नो रिलीजन व्हिच आई नो ऑफ. वहां पे अपने ऑल रिलीजन्स आर ईस्टर्न, नंबर 1. सो द अदर क्वेश्चन अबाउट दैट कि कौन लोग जो वो माँ की पूजा करते हैं और वो क्या करते हैं, और जो if you have a male god, then what do you do? If you have a female god, what do you do? I'm only saying that books and religious gospels do not determine the civilizational practices. The same people who worship the mother goddess went into ravaging and killing people. They had Akshara Akshahini Sena. The same people, the two brothers who studied under the same teacher and studied the same things, maybe they all studied the Upanishads and the Brahma Sutra, one became Arjun and the other became Duryodhana. So immediate following of a principle into practice is actually a tall order. Because what we are trying to say is that the West is destroying nature because of Christianity. This, I think, is ridiculous. Yeah. No, but that's what I'm saying. They are really barking the wrong tree. Civilizations are like look at India. In India, you have worshippers of the mother goddess, non-worshippers of anybody, Advait Vedantins, the worshippers of the Vishnu cult, the worshippers of Shiva, the worshippers of the naked Tirthankars, the worshippers of the fully clad Tirupati Balaji dressed in gold. Do we all represent the same value system? Do we all practice in the same way? Not necessarily. Therefore, what I'm saying is that if feminism, and especially ecofeminism, as a practical motivational device, you are saying do something to change your pattern, then you must actually look at a trigger which will make a difference. This is not the trigger. We are barking the wrong tree. This is what I'm saying. Number 1. Number 2, I'm saying that respect for nature, this is true, which I think Professor Miri was trying to say. Western civilization based upon Christianity and based upon Christianity has a difficulty. The separation from man from the rest of the nature is given in their religion. So whether it's Christianity or Islam or Jewish, man is different from nature. So the relationship has to be, you can be kind and compassionate, caring, but you're not one. In case of some Indian themes, some Indian themes, you can believe that you are all one. But what will you do after being one? Will you not kill people? Will you not cut trees? Now, in the story of the Sankhya, or even in the story of Sri Aurobindo, of the natural evolution, things will go to an apex, go to the bottom, and then finally there will be pralay and it will be recreated. Now, should you expedite the process of pralay? In case of morality, this is what Aurobindo is saying, everybody will get salvation, but you can do something better so that it is expedited. But in the, if somebody were to say कि पेड़ भी तो हम इसीलिए काटते हैं ताकि जल्दी से प्रलय हो, सब प्लावन हो जाए, खत्म हो जाए. So you can be the devil's advocate. What I'm saying is that the argument has to be more nuanced and the connections have to be more well-founded.
The feminist idea, why the eco-feminists are being questioned. आप ये कह रहे हैं कि औरत ही देवी है, औरत प्रकृति के करीब है, औरत ही जल का संरक्षण करेगी, औरत ही करेगी. You are essentializing it and you are taking away the agency of the woman. She wants to do something else. She can do something more. Men can also be caring. Men can also nurture the world. Why not? So the critique of ecofeminism, as I said, coming from these 8 quarters are primarily, it does over mythologization, it biologically essentializes, it does not give proper agency to the woman. There are certain incoherences in that, and it does not seem to give us a proper argument. Are you giving a utilitarian argument? So if you are saying कि सबका भला होगा प्रकृति को बचाने में, क्या आप यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट को मानेंगे बाकी सब चीजों में? अगर ये भला होता हो औरतों को पर्दे में रखने में, भला करेंगे. So therefore, they are demanding that your argument of ecofeminism requires more philosophical rigor. Thank you, sir. Most of the question has been asked by Professor Padi already. So first of all, I would like to congratulate you. I learned a lot of things, and I am always a fan of your lecture. So it was really enriching for me. And I'm working in feminist field, so it was really. There is one important point which I would like you to more focus on it. That is, you talked about pure academic feminism and activist feminism. Both are. I mean, there is no distinction between that. So I would like to know from you, because you have done so many field work. I learned from Shukla, Prashant told me. So I want you to give more light on this. So how do you, I mean. Right. What I was saying was that feminism on the whole sometimes is defined as a view, one, which recognizes that women are supported. Two, which says that it can be changed. And three, it says that we are committed to change. Now, if feminism is defined in this way, then feminism is essentially activist. So there is nothing like only a study of women, a study of women's exploitation, a study of women in distress can be a study of women's studies. Can it be differentiate? I mean, no, what I'm purely. saying is that if I'm only doing a study of what is the work, I can do it as a study of women without being a feminist. If I'm doing a study over there as a feminist, I want to change the reality and constantly try to make a policy change vis-a-vis the government, change the attitudes of the people in and around it, and constantly try to people, the women themselves, analyze themselves, that this is the condition and this needs to be. So I am essentially largely saying that feminist research will have to be one contextualized. It will have to have a certain kind of an agenda for change. Now, this is not necessarily for other research. Philosophy researches are not necessarily research for change. They are researches for understanding. I want to understand something on a Bhagavad, so I go to Professor Mishra and ask him what are the scriptures. I'll ask him that, okay, you have done so much work on Bhasha and you have done so much. Please tell me something from the reality of that. So he will let me understand. Not necessarily. But if I'm doing feminist research, it's essentially change. So feminist research is for change. एक बात इस पर मैं आपने ये कहा कि जैसे कि पश्चिमी धर्म जिसको हम कहते हैं, उस धर्म में जो बिलीफ है, जो विश्वास है, उससे बहुत ज्यादा एक कैटेगोरिकली जो हम कह देते हैं कि उनके द्वारा प्रकृति का उत्पीड़न किया जा रहा है या दोहन किया जा रहा है, और हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इसका आपने एक भरपूर तरीके से विरोध किया। ये जो कैटेगोरिकल मतलब स्टेटमेंट दिया जाता है वो सही नहीं है। और उसके लिए आपने जो उदाहरण दिया उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो उदाहरण दिया कि भाई यहाँ पर ट्रिपल गॉडेस की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ज्यादा कृपालु होते, दयालु होते। हमारे यहाँ असल में एक अवधारणा है जिसको कहते हैं
देवो भूत्वा देवमेव, देवता बन करके देवता की। और इसीलिए जैसे कि गॉडेस की पूजा करना, हर एक गॉडेस की पूजा करना एक ही नहीं। सरस्वती की पूजा करना या गौरी की पूजा करना या जो है काली की पूजा करना या माता बगलामुखी की पूजा करना, तारा की पूजा करना, ये सब एक रूप में नहीं है और नहीं किया जाना चाहिए। और परंपरा इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कहती भी, जैसे कि जो कहा गया ज्ञान इच्छित तो शंकरा, अगर ज्ञान की कामना करनी है तो शंकर की पूजा। और इसी प्रकार से और भी चाहिए अगर, तो उसके हिसाब से उस देव की पूजा करें। और जब आप पूजा करते हैं, जैसे कि मतलब बगलामुखी देवता है, और वो बगलामुखी की पूजा जो की जाती है, करने का जो उद्देश्य होता है, वो सचमुच में शत्रु मारण काम जो व्यक्ति हो, शत्रु को मारना चाहते हो, उसकी, तो उसको आप पूजा करते समय आपको उस रूप में मतलब देवी का ध्यान करना है, एकदम भयंकर और उस तरीके से। इनफैक्ट अगर आप किसी के बारे में सोचते हो कि हमको जो है इस तरह से करना, सामान्य व्यक्ति शायद उस तरह का कार्य भी पूजा भी ना करे। तो ये एक वस्तुतः जनरलाइजेशन हो गया कि गॉडेस की पूजा कर रहे हैं अगर हम, तो एक सारे गॉडेस की पूजा एक जैसी नहीं, और सभी, और उसमें और एक दूसरी बात भी है, हम एक चीज सोचते हैं कि व्यक्ति का जो आचरण है वही आचरण समग्र समाज में भी दिखाई पड़ेगा। ये नहीं होता, क्योंकि ये जो पूजा की बात है वो तो व्यक्तिगत है, और वो जो व्यक्तिगत उसका जो आचरण है, और समाज जो गवर्न होता है, वो समाज सचमुच में होता तो व्यक्तियों का समुदाय है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें आगे नहीं बढ़े, कुछ लोग ही आगे बढ़े। आप जरा सा विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ कि पाषाण धर्म जितने थे उन सब का पूरा सत्यानाश कर दिया गया, विनाश कर दिया गया। जितने टेम्पल थे सबको जो है पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया गया। और ये जो इस तरीके की चीजें हुई, और इन धर्मों को जब इस तरह से देखते हैं, और आप जरा भारत के बारे में भी इस तरह से देखने की कोशिश करिए, कि मैं तो इसको इस रूप में देखने समझने का प्रयास करता हूं कि ये भारत, जिसको हिंदू धर्म आप कहते हो, वो केवल एक हिंदू धर्म, एक धर्म नहीं है, बल्कि वो 2500-50 धर्मों का समुदाय है। और वो सभी, ब्यूटी ये है कि वो अपने आप को अलग क्लेम नहीं करते, दावा नहीं करते हैं कि मैं अलग धर्म हूं, और वो सब उसके एक छतरी के नीचे अपने आप को रखने का प्रयास। तो क्यों रखने का प्रयास करते हैं? उसकी वजह यह है कि वो पर स्वीकार्यता भी उपलब्ध है। और जब आप एक मॉडल लेकर के चलते हैं, एक ही मानक है, और वही मानक हर एक को स्वीकार्य होना चाहिए। और वो एक मानक कहां से आ रहा है? एक खास जगह से, एक खास पैगंबर से, एक खास चर्च से, एक खास संप्रदाय से आ रहा है। तो आप ये कैसे कहेंगे कि भाई वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? क्योंकि वो पूरा का पूरा एक ही मानक लेकर के चल रहा है। और यहां पर वो मानक भी बदलते जा रहे हैं। अब शिव की पूजा है, जैसे आप ये जरा सा विचार करें कि शिव की पूजा करते समय हम शिव का जो स्वरूप है, उस शिव के स्वरूप को देखें। अनेक जगह पर कहते हैं कि जाइए दर्शन करिए, हिमालय का आपने दर्शन कर लिया तो आपका ये एक तीर्थ है, हिमालय देवतात्मा। आप जो है इसी तरह से नदियां हैं, अलग अलग देवियां। अब ये कहना, आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई आप नदी को जो है देवता मानते हो, लेकिन उसको इतना प्रदूषित करके रखे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो नदी में जाके नहाते हैं, तब पहले घर से नहा के जाते हैं, फिर नदी में नहाते हैं, और नदी में कपड़ा नहीं धोते, क्योंकि ये जो उनकी जो धार्मिकता है वो इससे उनको बचाती है, रोकती है कि नहीं, यू कांट डू इट। और ये समस्या क्या हुई है कि जो लोग इस तरह का आचरण कर रहे हैं वो देश की राजनीति नहीं बनाते, राजनीति वो नीति नियंता नहीं बनते, तो इस तरह से नियम नहीं बनाते हैं कि नदियों में जो है चमड़े के कारखानों का मल अपशिष्ट जो है नहीं जाए, उसको देखते हैं। उन्होंने इस तरह से नाले नहीं बनाए हैं, जाकर तो ये कई सारी चीजें हैं। इतना मामला उलझा हुआ है कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है
कि जो केस है पश्चिमी धर्म के ऊपर वो इतने आसानी से खारिज नहीं। Thank you very much. I completely agree with everything which Professor Mishra is saying. But let me also add to it. I think what जो मुझे लगी बात जो आपने कही वो बहुत जरूरी थी। एक तो ये बात मुझे लगता है कि जो मुझे अपनी बात से अलग नहीं लगी, वो बात ये कि एक तो कि जो इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम के साथ खासतौर से ट्रू है, एक चीज है आपका पर्सनल परफेक्शन और एक आपका सोशल कंट्रीब्यूशन। तो बहुत सारी चीजें जो आप अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए करते हैं अपने, और दूसरा ये कि आप सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, ये एक भेद है जो फिलोसॉफिकली है। दूसरी बात जैसे आपने ये कही कि ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, और जो मैंने भी कहा था कि गॉडेस वर्शिप और गॉड वर्शिप अपने आप में इट्स ओवर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि अब जैसे आपने ये बताया कि गॉडेस भी देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ गॉडेसेस। जैसे गॉड्स भी हैं तो देयर आर काइंड एंड बेनेवोलेंट गॉड्स, एंड देयर आर रुद्र भी हैं और आशुतोष भी हैं, उसी तरह से बगलामुखी भी हैं और अन्नपूर्णा भी। तो सिर्फ गॉडेस वर्शिप से एक प्रकार का आचरण फॉलो करेगा ये नहीं करता। पर आपका ये कहना है कि सिंगल फाइल में अगर कोई चीज जाती है तो उसमें ज्यादा गुंजाइश है कि आप तो फिर एक ही तरह का आचरण करें जो वहां पे लिखा हुआ है। तो ये जिनको हम लोग साधारण उत्तर भारत में तभी ये कहते हैं कि फॉलो वन बुक, उन लोगों का एक ही तरीका होता है, हमारे यहाँ मल्टीप्लिसिटी। वन, आई हैव अ डीप डिफिकल्टी विद दिस। आई एम नॉट क्वाइट श्योर। हम लोग भी हिंदुस्तान में एक डबल आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं। एक आर्गुमेंट ये होता है कि हम डाइवर्सिटी को क्लेम करते हैं कि नहीं अलग अलग, दूसरी तरफ हम एकता को भी क्लेम कर रहे होते हैं कि अंततः लेकिन ये एक प्रकार का अद्वैत ही है। तो हम महेश्वर को भी अभिनव गुप्त में भी वो शिवाद्वैत स्थापित करने लगेंगे, और सब में तो चाहे वो एस एन दासगुप्ता हो, चाहे राधा कृष्ण हो, और चाहे वो मध्व हो, वो कहीं ना कहीं एक्रेडिटेड रूप में अद्वैत की स्थापना करते हुए ये कहते हैं कि स्पिरिट तो असल में अद्वैत ही है, जो फिर हमें लगभग सिंगल फाइल में ले। That's one of my observations. It's not a kind of. The other thing is, I was remembering a recent recast of the Kashi debate between Swami Dayanand and his opponents with the Sanatanis. कि क्या वेदों में मूर्ति पूजा में तो हमने कहा, लेकिन पुराण तो वेद नहीं। Now, if you take the Arya Samaji Dayanand version of the story as the spirit of the Vedas, then you get one picture of the Vedic people. Again, as I said, can you talk about the Vedic people? As I gave the example, in the story, the Vedas were taught to both Duryodhan and to Arjuna. They did not go to JNU. They did not read the Bible. But they were so different from each other. And one is so wicked that even God wants to kill him. Therefore, the following of the scripture does not follow from the presence of the scripture. This is one. Secondly, and more importantly, I think it's not from the Indian perspective. ये जो सारे के सारे लोग वेस्टर्न रिलीजन की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जिनको सबको मैंने कोट करा, ये सब क्रिश्चियन है। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम प्रकृति का दोहन। पूरे टाइम वो बेचारा ईसा मसीह जो खुदा का बेटा है, वो सिर्फ मोहब्बत के लिए कह के मर गया, लटक गया वो इंसानियत के लिए। और उस सिविलाइजेशन ने दुनिया के अंतर्गत सिवाय नफरत के, सिवाय वर्चस्व के लोगों को दबाने के अलावा कुछ नहीं। So you cannot blame Christianity for the colonization and the cruelty done to the people. So now when I like people like me who dislike the Europeans more than any other invader of the country, also want to make a distinction between the religion of Christ and the religion of the church. The religion of the Christ is very different from the religion of the church. The religion of the church was Pope ने आर्मी बनाई, Pope ने लोगों, पर वो religion of Christ नहीं था। Religion of Christ तो अगर किसी को देखता है तो वो तो गांधी की जिंदगानी में।
because Gandhi was more Christian than all the Britishers. बात है कि जिसको जो अपने आप को हिंदू घोषित कर रहा है उसको आप क्रिश्चियन बता रहे हैं। पूरी संस्था के साथ वर्चस्ववाद के साथ हर एक तरह से भरा हुआ, तो मैं तो भारत के लिए इसको एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि अभी भी जब हम लोगों के घर, हमारे घर पूजा होती है तो तुलसी दल किस दिन तोड़ना है किस दिन नहीं तोड़ना है उसके लिए पूरा का पूरा विधान, इस दिन नहीं तोड़ना है। तुलसी दल तोड़ने के पहले उसको जो है प्रार्थना करना है कि भाई हम तोड़ने जा रहे हैं। इसी प्रकार से बेलपत्र तोड़ना है तो कितना तोड़ना, ये नहीं कि आप उसको जो है बेलपत्र तोड़ करके ले आए शिव जी को चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक भाई आप किस तरह से उसको करेंगे। इनफैक्ट अब बेलपत्र है तो एक दिन आपने चढ़ा दिया, अगले दिन उसी बेलपत्र को फिर से आप चढ़ा सकते हैं, कुछ धुल करके फिर से उसको चढ़ा सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें हैं और ये प्रैक्टिस में भी है। ये बात बिल्कुल सही बात करी आपने, इससे बिल्कुल हम हाँ बिल्कुल उसको धर्म की पुस्तक और धर्म के विधान से सीधे जोड़कर जब हम पूरा सिविलाइजेशन गौरव और सिविलाइजेशन आक्रामक कर गए, इसमें मेरा बिल्कुल थमना चाहिए, बिल्कुल थमना चाहिए। लेकिन आप जितना उसका जनरलाइजेशन कर दे रहे हैं, वो दोनों का जो अंतर है वो अंतर भी स्वीकार करना पड़ेगा, ये मेरा, क्योंकि अंतर एक है। और क्योंकि वो एक, जैसे कि जो बात आपने कही राधा कृष्णन के बारे में कि राधा कृष्णन हुए, संदास गुप्ता हुए, इन दोनों को मैं इस विषय पर बड़ा कंफ्यूज्ड मानता हूं। क्योंकि जो ये दावा किया जाता है कि अद्वैत इन सब के मूल में छुपा हुआ है, मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता। कारण ये है कि वो अद्वैत को एक मॉडल के रूप में हर एक के साथ रखना अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि उस तरीके से तो हमारी जो पूरी परंपरा है, न्याय की परंपरा, उसको ही आपने किनारे कर दिया। 1000 वर्षों तक हम लोग जो है बौद्धों से लड़ते रहे, ये हमारा धर्म है, और आप उसको एकदम किनारे कर दे, वो तो नहीं है ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल कब चला गया, 17वीं शताब्दी तक नहीं चले, अभी भी चल रही, हम लोग भी तो अभी जिंदा है। तो जी Sir, in reference of all your talks, I want to make an observation. सर, इकोलॉजी को फेमिनिज्म के साथ जोड़ के हम बायस्ड तो नहीं हो रहे, क्योंकि यिन और यांग का कॉन्सेप्ट चाइनीज फिलॉसफी में है। हमारे यहाँ भी सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के समन्वय से सृष्टि स्थापित हो रही है। बाइबल में भी ईश्वर ने जग को बनाया है,
शुरू में उन्होंने कहा लेट्स देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। एंड आपने पृथ्वी को माता कहा, लेकिन पुराणों में ऐसी कथा है कि पृथ्वी भी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है कि उनको पापियों से उनका उद्धार हो। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पूरे डिबेट को सुना, अगर जो उदाहरण सर आपने दिए हैं उसमें अगर पुरुष होना, मैं हो सकता है ज्यादा आगे एक्सट्रीम पे जा रहा, अगर पुरुष होना एक इंडिकेटर है या एक वुमेन है तो एक्सप्लॉइट होगी, अगर हम इस बात को मान लें तो हमारे समाज में जो हाल थर्ड जेंडर का है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जहां तक मैं जानता हूं दोनों जिम्मेदार हैं। और आज जब हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमनिज्म को छोड़ दे रहे हैं, और पूरे विश्व में आज जब थर्ड जेंडर के ह्यूमन राइट की बात हो रही है तब भी आज हम फेमिनिज्म के उसमें बात कर रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है? थर्ड जेंडर के दमन के लिए पुरुष भी उतना जिम्मेदार है, स्त्री भी जिम्मेदार है, कोई एक्टिव है कोई पैसिव है, तो ये बात निकल के नहीं आ रही। मेरा तीसरा ये ऑब्जर्वेशन है कि गांधी को आपने फेमिनिस्ट कहा कि वो उनसे ज्यादा उस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहे होंगे, बट जो उनका जो वार्तालाप है और जो उनका जो एटीट्यूड था अंबेडकर और गांधी का जो टसल हुआ है पूना पैक्ट में, उसमें तो अंबेडकर ने साफ कहा है कि आई हैव सीन अ फेयर मैन इन हिम एंड हैविंग अ रियल फैंस। तो गांधी को कहीं भी लगा करके हमें नहीं लगता है कि उनको कहीं भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। और नॉट ओनली दिस, ये बात आपने सही कही कि वो एक हिंदू से ज्यादा एक ईसाई हैं, ये बात सही है, क्योंकि उन्होंने जो ऑगस्टीन के कन्फेशन पर जो बुक लिखी है सबसे ज्यादा उन्होंने उसी को पूरे जीवन में माना। लेकिन गांधी जी के जीवन में हम देखेंगे कि वो ही कंडक्टिंग 3 पेपर्स, वो गुजराती में एक बहुत बड़े हिंदू हैं, लेकिन जो उनका यंग इंडिया है उसमें सबसे बड़े क्रिश्चियन है। तो गांधी को लेकर चलना मुझे नहीं लगता कि वो फेमिनिज्म के किसी उसमें सो I think with Gandhi, of course, many things can be said. All the debates of Gandhi are very important, especially the 3 debates: the Gandhi Savarkar debate, the Gandhi Tagore debate, and the Gandhi Ambedkar debate. All of them are very important and hugely. The other thing which I say that with some responsibility is that Gandhi very categorically does never claim to be a philosopher. Also, he never said that I am consistent. And he said that my later writings should be taken in terms of a correction of my earlier writing. He did not study philosophy. Also, he did not study anything very well. So his comparison and his debate with Ambedkar always I find a little difficult, because Ambedkar is a big scholar. He's a Columbia University double PhD scholar, and Gandhi is a person who makes elementary spelling mistakes in Hindi. So Gandhi's moral stature is something is fairly respected, but not his scholarship, and he, much like Ambedkar, does not claim to be a philosopher. So full-fledged argumentations are not the kind of philosophical argumentation that you have in that. My position on Gandhi, what that I mentioned, was that Gandhi is feminizing his identity. He is not a feminist. Who's a feminist? A feminist is a person who questions the patriarchal structure of society. Gandhi does not. He accepts the male-female distinction and wants to become like a woman. So, therefore, in one way, he has accepted patriarchy. So, he is paternalistic, feminized, but not. The other question that in terms of the third thing, one of the things is that with reference to the Nalsa judgment which came 2 years back, one thing which I think all young people must understand, ये भी थर्ड जेंडर भी एक बहुत ही कंफ्यूज कैटेगरी है, कोई कैटेगरी नहीं। पहली बात तो सेक्स और जेंडर का फर्क अगर आप माने कि सेक्स बायोलॉजिकल है और जेंडर सोशल है, तो थर्ड जेंडर क्या होता है? थर्ड जेंडर कोई हो ही नहीं सकता। बायोलॉजिकल कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखें तो आपने थर्ड जेंडर में हिंदुस्तान में क्या करा? वो बच्चे जिनके के कंफ्यूज सेक्सुअल पार्ट्स हैं, वो बच्चे जिनके के सेक्सुअल पार्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं है, वो बच्चे जो आगे चलकर अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मैं लड़के की बॉडी में पैदा हो गया हूं लेकिन मैं लड़की की तरह सोचता हूँ, वो बच्चे जो सोचते हैं कि मैं लड़की की बॉडी में पैदा हुआ लड़के की तरह सोचता हूँ, वो लोग जो सोचते हैं कि मैं आज सुबह लड़की की तरह सोचता हूँ, शाम को लड़के की तरह सोचता हूँ, वो जिनको हम लोग यहाँ पे आमतौर पर हिजड़ा कहते हैं, जो अपने आप में कोई कैटेगरी नहीं है बल्कि एक प्रोफेशन है,
जो आपके घर में आके बधाई गाते हैं बच्चे पैदा होने पर और शादी पर, वो एक प्रोफेशन है, वो कोई बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं है। क्योंकि अगर आप जाके देखें बंबई में तो सारे हिजड़ों की जो स्वामिनी होती है वो एक तमिल औरत होती है। इसके अलावा कई लोग उनमें से ऐसे हैं जो होमोसेक्सुअल लड़के हैं जो कि कैस्ट्रेट हो गए। सो एक बहुत बड़ा 7-8 तरीके का लोगों का ग्रुप को आपने एक डब्बे में डाल दिया और कह दिया ये थर्ड जेंडर है। So that's one very confusing. Other thing is actually what you one need to understand is the phenomenon of the trans woman and the trans man. एक आदमी जो है वो सोचता है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की बन के अपने ऑपरेशन करा के अपनी बड़ी बड़ी आंखें बनाने अपने ब्रेस्ट को बड़ा करा के ऐसी एक सुंदर लड़की बन जाऊँ। ये जो ट्रांस वुमन है या एक लड़की है वो सोचती है कि मैं बलशाली काले कपड़े पहन के लेदर के कपड़े पहन के मैं एक लड़का बन जाऊँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग जैसे जो 30 साल से फेमिनिज्म कर रहे हैं, हम लोग को से ये लोग बहुत नाराज रहते हैं कि तुम हमको अकोमोडेट नहीं कर रहे। हम लोग ये कह रहे हैं जो हमारे लिए समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ठीक है, हमारी समस्या ये है कि हम 40 साल से 30 साल से इसी बात के लिए लड़ रहे हैं कि लड़कियों को लड़कों के लिए आकर्षक बनने की आवश्यकता नहीं है, लड़कों को लड़कियों के लिए आकर्षक बनने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी भरपूर इंसानियत के हिसाब से जैसे रहना चाहें वो रहें। पुरुष को आकर्षित करने के लिए वो अपनी भौहें बनाएं, अपनी खाल को सफेद करें और उसके अंदर से बाल हटाएं, ऐसा करने की उनका आग्रह नहीं है। पर ये लोग जैसे ऋतुपर्णो घोष वगैरह थे, ये लोग पुरुष को आकर्षित करने वाली सबसे ज्यादा सुंदर सरा जैसे करने के लिए अपने आप को इंजेक्शन लगा लगा के उन्होंने अपनी देह के साथ इतना अत्याचार किया कि वो मर गए। वो ट्रांस वुमन और ट्रांस मैन जो हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड में भी है, अभी वो एक है जेम्स स्टर्न जो कि फिलॉसफी के ऑक्सफोर्ड के बहुत बड़े प्रोफेसर, वो शाम को ड्रैग क्वीन बन जाती है। इन लोगों के साथ हमारी प्रॉब्लम है कि हम उनको नहीं अकोमोडेट कर पाते, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि तुम एक तरीके से वो जो समाज के अंतर्गत जो रूपाकार बने हुए हैं कि स्त्री को ऐसा होना चाहिए कि वो पुरुष को सेक्सुअली आकर्षित करे, तुम उसी रूपाकार को पोषित कर रहे हो। वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारी इच्छा है। अब हमारा प्रश्न ये है कि तुम्हारी हर इच्छा को स्वीकार्यता देना क्या हमारे लिए अनिवार्य है? इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, पर हमें सोचने का समय है। इस तरीके से हम आज हर कैटेगरी कंफ्यूज हैं। जब विश्व की कल्पना करें जब 50,000 लोग लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके लिए तो हिस्टोरिकली ब्लेम करना ये नहीं कर रहे हैं। हिस्टोरिकल गिल्ट और हिस्टोरिकल ब्लेम नहीं कर रहे। बात ये है कि हम आज के सवेरे कल के सवेरे की क्या तैयारी करें। तो हम ये ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ये तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जिनके अंतर्गत परिवर्तन की आवश्यकता है। वो पहले ठीक थी कि गलत थी, इसके बारे में हम इस समय कोई बहुत अधिक टिप्पणी करना नहीं चाह रहे। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में हम क्या बचाना चाह रहे हैं। तो अगर इको फेमिनिज्म के माध्यम से आप ये कह रहे हैं कि फेमिनिज्म अपने आप में मानवीयता को पीछे छोड़ रही है, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम आपने मानवीयता की परिभाषा जो है वो केवल पुरुष केंद्रितता से दी थी। हम जिसको आप फीमेल कह रहे थे, जिसको आप पोषण, दया, करुणा का भाव कह रहे थे और कह रहे थे कि ये तो कोमलता है, इसका राजनीति में, समाज में, विद्या में कोई स्थान नहीं है। वहां पर तो संघर्ष, अभ्यास, विजय ये महत्वपूर्ण है। तो ये कहना बंद। इस कारण एक डाइवर्सिटी को देने के लिए ये इको फेमिनिस्ट अपनी बात कह रहे हैं और इसके मूल्य को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्योंकि दर्शन की संगोष्ठी हो रही, इसलिए हम इसकी दार्शनिक परीक्षा कर रहे हैं कि क्या ये आर्गुमेंट अपने आप में कोहेरेंट है, क्या दर्शन के इतिहास में इसको रखा जा सकता है, क्या ये इसके अंतर्गत जो दिए गए तर्क हैं उनके अंदर वही वाला भय तो नहीं है कि आपने एक तरफ कहा कि आपने पुरुष केंद्रित बना दिया था, अब आप स्त्री केंद्रित बना रहे हैं, तो आप कहीं केंद्रीयकरण और साधारणीकरण का जो एसेंशियल स्वरूप है उसी में तो नहीं फंसे जा रहे। तो हम क्योंकि दर्शन के विद्यार्थी हैं इसलिए हम उनकी बात का मूल्य समझ रहे हैं, लेकिन मूल्य समझने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको यूं ही स्वीकार कर लेंगे। हमारे दो दार्शनिक जो हमारे अभ्यास के उपकरण हैं उसके ऊपर तो हम इसका परिष्कार करेंगे और हमारे पास ये परिष्कार के सबसे बड़े न्यायिक बैठे हैं। तो इन लोगों का तो उद्देश्य ये है कि परिष्कार 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 परिष्कार, और इतना परिष्कार हो गया कि परिवर्तन करके प्राचीन न्याय को नवीन न्याय से विस्थापित।
Okay, just last question. Okay, okay. Sir, really this is fruitful discussion. I have a questions regarding Tegar. You have point in your lecture, Tegar. Uh, Regarding sadhana, I think you have said that Tegar has given the superiority of human. I think he is saying the human beings as a special creation of God or nature. So is he doing the species chauvinism or human chauvinism? Because उसने कहा है कि वो ह्यूमन के पास रीजन है, फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन है, तो is he doing this? Yeah, that is This is the also question. अच्छा मुझे से आप लोगों को आवाज दर्ज में पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा आपको क्या है, किसी का जन्म प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है, उसमें भी ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करना सबसे बड़ा है, उसमें भी पुरुष होना ये बड़ी बात है, लिखी तो नहीं स्वीकार करेंगे। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से भी एंथ्रोपोसेंट्रिक और नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक डिबेट भी है. The question is, the difficulty is that teams will, one way or the other, uh, have any theory which is anthropogenic, because we are the creator. But will it be anthropocentric is the question. The deep ecology people are saying that you need to expand the self to an extent that even if you're anthropocentric, if your self is all encompassing, nothing is left, and the fault lines of anthropocentrism are gone away. The critics of the deep ecology are saying that what you are doing is containment, and you are not respecting diversity. There is a huge criticism against it. Yeah, and from the feminist Okay, okay. Thank you, sir. You have ignited us. Really, thank you. This is the last because we are running for lunch. Okay, okay, sorry, sir. So, actually, I really have a difficulty in understanding the category of feminine qualities and masculine qualities because, we started the discussion by saying that, okay, so this is one thing. So, what is feminine, what is masculine? And if we have a problem with categorizing feminine as anything associated with women, then also this claim that Gandhi was feminist is problematic, but Gandhi was feminine is also problematic because there should be no. I mean, we shouldn't, put it in a spotlight that a man is uh, showing off the qualities which were traditionally or conventionally associated with women. Another one was that we started the discussion by saying that ecofeminism talks about how there are connections between women and nature, and then we, went on criticizing it. But I think that one of the major connections that it talks about, or where it starts from, is that they both go through similar oppression. So recognizing that is very important. Also, I think that even like especially this comes from Western context. That when the canonical Western philosophers have tried to understand nature aesthetically, especially, so they have not only talked about concepts of beauty, which was again considered feminine, but they've also talked about categories like sublime. Now, sublime was a category of aesthetics which was associated with something which was bold, courageous, and masculine. So, obviously, that category in itself is problematic. But then there's also this thing that women have not always been associated with. I mean, in nature also, they have identified properties which they said were masculine. So, like respond to all these things. Also, if you could comment on, like you started with saying that philosophy is only analytic. I have so many enemies of that. Everybody finds me extremely outdated in my championship of analysis as still the important tool for principalizing. That I still am sticking my neck out. That methodologically, analysis of concepts remains an extremely important task of philosophy, though it might also do many other things. But the circuit is important. Even when it comes to looking at ecology, the environment,
or philosophy of environment, which is not environment. And it's not right. It's very important for us to look at it and what do the terms mean, how are they related to other terms, and how do they connect to each other. As you rightly said, one of the most important things that the ecofeminists, as feminists, are saying that gender as a category of analysis should be brought in. When gender as a category of analysis is brought in, the other category which is brought in is patriarchy. Patriarchy actually rests on the assumption of the male and the female as different, and then within that, a set of values as masculine and the other as feminine. What some people are saying is that when you glorify the feminine, then actually in one way you are accepting the category of patriarchy itself. Because the distinction of the male and the female and the masculine and the feminine is within the fold of patriarchy. When it comes to Gandhi, I was mentioning that why Gandhi has many issues that you can like and many that you do not like. And also, we personally, you are a generation away. I am actually coming from the generation which is immediately followed that. My mother was actually part of the Gandhi movement. She was there on the day, one day before Gandhi was shot. So I have a certain kind of a personal connect. So the kind, and my mother had an even more connect. So the kind of thing you can objectively say, sometimes I wonder when I criticize Gandhi, my mother would have been very unhappy. But this is an extra philosophical issue. Whether she would have been happy or not happy, the fact is that can I take it philosophically, and I can philosophically speak, because the point is that in many cases Gandhi really did not have a good argument. And in many cases, Gandhi has incoherences. He has an answer to his incoherence that take my later view as superior to my earlier view. So don't say pehle to apni the idea that what I'm saying is that Gandhi to me is neither the liberal feminist, nor a radical feminist, nor a psychoanalytic, but he is feminizing himself. So the so-called framework of what is supposed to be a woman-like quality is the kind of thing. So the Narandal and the Garandal, so when you have Subhash Bose and all the Chuvalas, he is one almost woman-like figure in all of them. And again, when you see, you are right in saying that when I say woman-like, I'm saying that within the stereotypical framework in which the woman-like means one thing. And he is drawing, it's interesting. Professor Mishra was not ready to agree with that. If you look at biographically, Gandhi was born in Hindu. His mother was a follower of a particular kind of a sect which was very Jain. The community that he was living was very Jain. He was not a very religious person. His exposure to religion, the first organized exposure to religion is actually Christianity, which he learns in school, like many of us. Like we learn more religion in school Christianity than we learn at home, because at home there were very few religious practices. A lot of people in Bengal are Brahmins, so they don't have the idolatry which is so common. So Gandhi's exposure, much like Aurangzeb, to Hinduism comes very late in life. So when he starts commenting on the Gita and the other, it is not part of the earlier revolution. But people are very worried to get such a sentimental or but as philosophers, one of the most important things for us is to look at closely what is the text, what is the belief, what are the terms, what are the arguments given, and that is the spirit of Indian philosophizing, search for counterfactuals. The Buddhists did not meet so often the Nayaics. They imagine other Nayaik ye karega, Dhiru ye karega, so the search for counterfactuals and that has been the reason for the development of Indian philosophy up to the 17th century. The moment we stopped it, I was just saying that how much sense do you think it makes to consider the root issues like feminist issues and feminist problems and environmental issues? No, I think we can learn much. And the ecofeminists have a great deal to. You cannot talk about nature without looking at other questions of not only gender, of race, caste,
बिकॉज जैसे ट्राइबल लोगों का ट्राइबल लैंड हमें हथियारी ना, काले लोगों की जमीनें हथियारी, रेड इंडियंस की जमीनें हथियारी अमेरिकन ने। सो द रेस, क्लास, जेंडर, कैपिटलिज्म का जो पूरा नेटवर्क है उसके बिना प्रकृति के बारे में नहीं समझा जा सकता। और इनका ये कहना है कि ये फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग भी आपको लेके चलनी चाहिए, और ये फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग भी एक ही नहीं, this also is nuanced through the human culture. The only thing is that when this thing comes to philosophy, तो हम क्या करें? तो हमें इसको philosophy इसमें क्या contribute करेगी? वो इसमें conceptual analysis के माध्यम से contribute करेगी। वो इसमें बाकी कहानी है तो sociologist से ज़्यादा अच्छी जानता है, historian से ज़्यादा अच्छी जानता है। Difficulty ये है कि हिंदुस्तान में बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में भी sociology has started dominating philosophy. In technology institutions, technology has started dominating philosophy. In politics, religion has started dominating philosophy. तो हम जो अपनी प्लेट में से ला सकते हैं, हमारी जो विद्या है, वो भी तो नहीं हम सब लोगों के पीछे पीछे चलना है कि एवं सिनेमा से एक था कह चुके हैं। Regarding sociology, sociology was not an organized discipline before 1960. It was emerged at night. After that, sociology. And now philosophers are following. But thank you, sir. I must, on behalf of this council, I thank ISP and Chandra for being agreed to come here and kind of research. And really, it's a whatever the plan of council was to cover one area of eco-feminism, and you cover a lot. Thank you. So I was thinking to say something about feminism, but you, I lost my mark. No. Market still open. You grabbed the market such a way that my position in that market is a very small thing. But thank you, sir. Sir, ये है। ये अभी क्लोज कर दीजिए। ठीक है ना? फिर हम लोग के लिए अच्छा ये पार्टी को रिस्पॉन्ड actually from 7:30 there is a 7:30 to 10:30 approximately 10 or 10:30 because in between from 8:30 or 8:30 to 9 or 9 to 9:30 we will have our dinner ready in the classroom because USA time that is EST time this class will be started at 7:30 p.m. and it will continue up to 10:30 with half an hour break. In that break we'll have dinner. It will be shared in the group. That's why the group is created. Yeah. Thank you. I want philosophers. That's why it's yeah.
On यहाँ हमको आराम से बोलेगा Ready?